Okay, good evening, everyone. Those who have joined YouTube channel and those who want to attend Zoom session. So I will just share that link there. So Subhrajyoti is there, you know. So let me start with the session now. Okay, very good morning, good afternoon, good evening, all three together. है ना? Although we are meeting in the evening time, तो जब जागो तभी सवेरा, वो चीज़ है. तो जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उन सभी को मैं वेलकम करता हूँ. और कुछ देर पहले से मेरी बातचीत हो रही थी जूम में, तो मैं सारी चीज़ों को वन बाय वन आई विल कवर देयर. सो लेट मी डू वन थिंग हियर कि सुब्रज्योति ने यहाँ पर कुछ मैसेज किया है यूट्यूब में, जस्ट मैं रीड कर रहा हूँ. In UPSC preparation, some topics are very interesting, some are very boring and difficult to understand the economic and Indian society. How to develop interest in those subjects? उसका interest to develop such interest, only thing is that try to link with current aspect. If you're linking with current aspect, then it becomes very interesting because many applied areas comes. तो वे जब आप अप्लाइड एरिया के साथ पढ़ते हैं तो उसका एक अलग ही अच्छा फील होता है वहां पर. समटाइम द सब्जेक्ट में भी वेरी बोरिंग और बहुत कुछ मोनोटोनस, बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट ज्यादा होता है. तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि इफ यू कनेक्ट विद न्यूज़पेपर, वेबसाइट, करंट एस्पेक्ट, कई बार यू कैन वॉच वीडियोज ऑल्सो देयर. जैसे यूट्यूब चैनल में कई बार वीडियोज होते हैं, यूट्यूब वीडियोज में डॉक्यूमेंट्रीज हो गया रिलेटेड टू दोज काइंड ऑफ टॉपिक्स थे. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोसाइटी, तो उस पर कई अच्छे अच्छे वीडियोज भी हैं, तो आप वो वॉच कर सकते हैं. तो उससे थोड़ा इंटरेस्ट मतलब बढ़ जाता है. ठीक है, दैट वे यू कैन डू इट. सो एनीवे, उसका सी द इंटरेस्ट यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ. उसका एक तरीका वही है कि यू हैव टू जस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, एंड देन उसके जो भी मल्टीपल डायमेंशंस हैं वो सारी चीजों को करना पड़ेगा. ठीक है, तो डोंट वरी, सब्जेक्ट टाइम के साथ आता है ना. वो ऑल ऑफ ए सडन नहीं रहेगा, बट यू विल बी एबल टू डेवलप देयर. जैसे इकोनॉमिक्स में कई सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स आते हैं. ठीक है, तो जस्ट मैं अभी जूम लिंक भी पेस्ट कर रहा हूँ. आई हैव पुट इन द चैट बॉक्स ऑफ दिस YouTube channel there. So those who want to join can join from there. ठीक है. Yes, how to interest economic and Indian society both are important, Subhrajyoti, because there are questions asked from these two subjects, and they're around like Indian economy, minimum 15 questions are asked. तो and again economic questions are linked with budget, economic survey. ये सारे interesting areas आप वहां से कर सकते हो. What are the government programs are there, कैसा उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. तो दैट टेक्निकल एस्पेक्ट जो थियरी पार्ट है, दैट विल गेट कनेक्टेड देयर, राइट. दैट यू कैन कनेक्ट देयर, दैट पार्ट कम्स देयर. yes, they are equally important, you are right there, that's very important. Okay, anyway, let's get back to the topic first. So what I'm going to do right now, पहला मैं I'll discuss about earth sciences, then I'll give you feedback on your submitted answers. जो भी आपने बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चन का असाइनमेंट का आंसर दिया है, वो पार्ट का मैं फीडबैक में दूंगा मैं. ठीक है, तो पहला पार्ट है, लेट अस गो इनटू अर्थ साइंसेस. राइट, आई विल कवर दोज एरियाज वन बाय वन एंड इट विल नॉट टेक मच टाइम. इसका दो तीन चीजों को ध्यान रखना है. राइट, इसमें दो तीन चीजें ये है कि पहला चीज ये होता है कि वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. ठीक है, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस which is a central government ministry which work for oceanography, atmospheric sciences, meteorology, seismology, weather forecast, polar science. अलग अलग जब भी हम लोग अर्थ साइंस की बात करते हैं, पृथ्वी विज्ञान, इसमें बहुत सारे डायमेंशंस आते हैं. एटमॉस्फेयर का जो स्टडी होता है, वायुमंडल का, क्लाउड फॉर्मेशन, विंड पैटर्न, है ना. इसको ज्योग्राफी से लिंक करना है, लिंक विद ज्योग्राफी.
डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ भी हम लिंक कर सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, स्पेस बेस्ड लाइक वेदर सैटेलाइट, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट ऑफ इसरो वगैरह आता है वहां पर। अर्थ ऑब्जर्वेशन में लैंड लाइक लिथोस्फेयर, वाटर देन हाइड्रोस्फेयर, ओशन स्टडीज वगैरह होते हैं, मरीन लाइफ एंड अदर नॉन लिविंग रिसोर्सेज फ्रॉम ओशंस देयर, वो पार्ट भी आता है। तो कहने का मतलब एट अर्थ साइंस इटसेल्फ बहुत डायनामिक है। यू हैव एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ओशनोग्राफी, क्रायोस्फेयर जैसे कि आर्टिक अंटार्कटिक रिसर्च, प्लस यू हैव अ पार्ट ऑफ हिमालयन ग्लेशियर्स एंड यू नो द ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज कॉन्टेक्स्ट भी आता है, इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट भी वहां पर लिंक हो जाता है। तो इसलिए बहुत डायनेमिक टॉपिक है। एंड वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री विच डील विद ऑल दिस मैटर, साइंटिफिक रिसर्च, और कई सारे अचीवमेंट्स होते हैं जैसे पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जब आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में जाते हैं तो यू फाइंड last 1 year, last 5 years, there are number of scientific exploration, ठीक है, कई सारे डेवलपमेंट होते हैं, all these are covered there, ठीक है। So let us have a brief overview on earth sciences, then I'll go to some achievements part of it, कि कहाँ भी यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट हो सकता है, where UPSC can ask question on that, so we can see that, right? So let me just share my iPad here, right? You will be able to see that, right? I think you all can see this. Just 1 second. I'll just attend one call and get back to you. Just 1 second. Can you all see the screen? ये स्क्रीन दिख रहा है सबको? कोई भी इसको yes and no कर सकते हैं। ये सबको स्क्रीन दिख रहा है? और साइंसेस अपडेट्स? श्रेया, अंकिता, anyone can confirm me? Yes, sir. You all can see that. Very good. All right. So let me get back to here. ठीक है। तो और साइंसेस जो अपडेट्स हैं, अब इसमें पहला मैंने बताया कि हियर कम्स एटमॉस्फेरिक रिसर्च, है ना, जो एटमॉस्फेरिक साइंसेस होता है। अब जैसे अर्थ है, अर्थ इज मेड ऑफ 3 स्पेयर्स। यू हैव रेड इन ज्योग्राफी, दैट इज लिथोस्फियर, कॉन्टिनेंट्स एंड लैंड मास होता है, एटमॉस्फेयर एयर मास है, एंड देन हाइड्रोस्फेयर, उसमें फ्रेश वाटर और मरीन में ओशन भी आता है, ठीक है। एक और पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, दैट इज बायोस्फीयर, वेयर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड टू लिव, वेदर प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सारा पार्ट में। तो एटमॉस्फेरिक साइंस पहला कंपोनेंट होता है। जैसे कि यू कैन सी द, ये स्टेशन है, कई सारे रिसर्च स्टेशन बिल्ड होते हैं जिससे विंड, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन और कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उससे मेजरमेंट किया जाता है। इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको पता है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना। आईएमडी जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, बेस्ड इन न्यू दिल्ली, इनके बहुत सारे रिसर्च लैब्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं, और वहां पे सारे स्टडी किया जाता है। ऐसे ही पुणे में एक और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, आईआईटीएम, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे में है। इट डज द वर्क इन ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। देन देयर इज जब वेदर फोरकास्ट की बात आती है तो वी हैव इन नोएडा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। ये सभी ऑटोनोमस साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं दैट वर्क अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। जैसे नोएडा में जो सेंटर है उसको कहते हैं नेशनल सेंटर फॉर मीडियम वेदर फोरकास्ट, है वहां पर। तो जो भी एटमॉस्फेरिक डेटा होता है, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारा कुछ मेजरमेंट किया जाता है, एंड देयर डिफरेंट बेस स्टेशंस आर देयर। कई बार हम सैटेलाइट का यूज करते हैं, जैसे कि जो भी वेदर साइंस रिलेटेड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट होता है, जैसे इसरो ने सैटेलाइट बना रखा है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, तो वहां से भी डेटा लिया जाता है। दैट इज वन पार्ट कम्स। देन व्हाट यू सी हियर, मेट्रोलॉजी, किसका क्या क्या ब्रांचेस है, राइट। जैसे वन इज वेदर एंड क्लाइमेट, है ना, वो उसको स्टडी किया जाता है। वेदर इज क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। क्लाइमेट का हम एवरेज लेते हैं 25 to 30 years, है ना, मेजरमेंट होता है। तो इसमें एक एरिया आता है, जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी। देन यू हैव अ इन टर्म्स ऑफ बैरोमेट्री होता है, डेप्थ वगैरह मेजर करते हैं।
कई बार इसमें फिजिक्स होते हैं जो हम स्टडी करते हैं, उसके टेम्परेचर वगैरह, जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। बायोलॉजी और इन्वायरमेंट आता है लाइफ साइंसेस के बेस्ड में, कि कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से वो हम स्टडी करते हैं वहां पर, उसका इम्पैक्ट क्या होता है। और ये सारे वेरिएबल्स हैं, है ना। जो हम एयर की बात करते हैं एटमॉस्फेरिक, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टाइप ऑफ टेम्परेचर, विंड, ह्यूमिडिटी, ये सब का स्टडी किया जाता है। और दिस स्टडी देयर, ठीक है। देन सिस्मोलॉजी, जैसे आपको पता है अर्थक्वेक, रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऐसे इवेंट हो रहे हैं अर्थक्वेक। अभी जैसे नेपाल में अभी अर्थक्वेक हुआ, उससे पहले बहुत मैसिव अर्थक्वेक टर्की में हुआ ना, टर्की एंड सीरिया, बहुत सारे लोग का डेथ भी हुआ वहां पर। नेपाल में अभी पिछले 5 साल 6 साल के अंदर ही, है ना, 2 बार हो चुका है। इससे पहले काठमांडू में हुआ था, फिर नेपाल में हुआ है, तो रिलीफ वर्क वहां पर है। तो ये सब का स्टडी किया जाता है सिस्मोलॉजी में। तो सिस्मोलॉजी में क्या करते हैं, सारा डाटा जो होता है, 2 स्केल होते हैं। वन इज रिक्टर स्केल एंड सेकंड मर्कली स्केल, है ना, जहां पर मेजरमेंट किया जाता है। अगेन, गवर्नमेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आर देयर वर्ल्ड वाइड, है ना। वर्ल्ड वाइड ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो कंटिन्यूसली यूजिंग सिस्मोग्राफ डेटा वगैरह कलेक्ट कर जाते हैं, सो दैट द टाइमली उसका फोरकास्ट किया जा सके एंड एनी सच इम्पैक्ट कैन बी मिटिगेटेड, उसका इम्पैक्ट को हम कम कर सके। तो वो चीज वहां पर आता है। तो यहाँ पर सारी चीजें जो कि आपको पता है, द कॉज ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ प्लेट, प्लेट का जो मूवमेंट होता है, टेक्टोनिक जो होता है, तो वहां पर उसके कारण होता है, ठीक है। तो वहाँ सारी चीजों रिकॉर्ड किया जाता है एंड स्टडी। इसमें सबसे बड़ा बहुत वल्नरेबल एरिया होता है रिंग ऑफ फायर। आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, पैसिफिक ओशन में मोस्टली जो होते हैं, जो जहां पे 2 प्लेट है, वैगनर थ्योरी जो है, जहां प्लेट्स का मिलना होता है, और क्योंकि कंटिन्यूसली ये प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, तो वहां पे वेनेवर द सबडक्शन होता है, तो वहां पर ये एनर्जी जो होते हैं, पी वेव, एस वेव, एंड दैट कम्स टू द सरफेस। तो उसके कारण जो अर्थक्वेक वगैरह वहां पर है, दैट वन पार्ट यू हैव कवर्ड देयर। हाउ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्स हियर, अर्थ साइंस, मेजरमेंट, प्रॉपर मेजरमेंट, एक्यूरेट मेजरमेंट, वहां पर वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट आता है, ठीक है। साइंटिस्ट का मेजरमेंट वगैरह होता है। फिर अर्थ साइंस में आता है ओशनोग्राफी, ये भी ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। ओशन स्टडीज, ओशन के डेप्थ, टेम्परेचर, सॉल्ट कंटेंट, सैलिनिटी, फिर साथ साथ लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ये सभी का स्टडी किया जाता है ना। तो वहां पे भी साइंटिस्ट होते हैं, वो सारे स्टडी करते हैं, सारा पैरामीटर्स होता है, उन सभी का डाटा को इकट्ठा किया जाता है। उसमें कई चीजें होती है, ओशन करंट, ओशन वेव, और आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओशन एनर्जी, जैसे वेव एनर्जी, करंट एनर्जी। और एक इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट चीज डेवलपमेंट हुआ है, ओटेक, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, है ना, जहां पर हम टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सरफेस वाटर एंड डीप वाटर, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, इवन हम डिसैलिनेशन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड होता है। देन दैट यहाँ पर जो है पोलर साइंस, जैसे कि आर्टिक, है ना, और वहाँ क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस आर्टिक में हो रहा है। उसी तरह अंटार्कटिका जो है, वहां भी ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट हो रहा है, एंड द आइस स्नो कवर दैट्स मेल्टिंग फास्ट, तो उसका इम्पैक्ट हो रहा है। एंड अगेन व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम क्रायोस्फीयर की बात करते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड माउंटेन ग्लेशियर्स, जैसे हिमालयन ग्लेशियर्स जो है, अगर वहां पर कुछ इम्पैक्ट होता है, उसका डायरेक्ट लिंक है ग्लोबल क्लाइमेट के साथ। आर्टिक में मेल्टिंग जो हो रहा है, उसका सीधा कनेक्शन है ग्लोबल एस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, ओशन, सब कुछ इंटरलिंक्ड है वहां पर। अर्थ एक डायनेमिक सिस्टम की तरह काम करता है। तो उसका हो सकता है कि वो लोकल इम्पैक्ट हो, कि आर्टिक में आइस मेल्ट हो रहा है, वहां बायोडाइवर्सिटी लॉस, बाकी चीजें हैं, लेकिन उसका अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वहां भी क्लाइमेट के बेस में वहां पे इम्पैक्ट होता है। सेम इज ट्रू विद अंटार्कटिका, सेम इज ट्रू विद मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। तो इसके लिए रिसर्च स्टेशन होते हैं, जैसे कि अंडर अंटार्कटिक ट्रीटी, बहुत सारी कंट्रीज ने अंटार्कटिका में, साउथ पोल में, वेरियस साइंटिफिक स्टडीज के लिए अपना रिसर्च स्टेशन बनाया है। अगर हम इंडिया की बात करें, तो हमारा पहला जो अंटार्कटिका का एक्सपेडिशन हुआ था, वो 1981 में हुआ था, राइट, मोर देन 40 इयर्स बैक हुआ था, जहां पर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया, फंड दिया, टीम ऑफ साइंटिस्ट कहाँ गए, अंटार्कटिका गए, और वहां पर रिसर्च स्टेशन बनाया। एंड आई एम वेरी श्योर यू हैव हर्ड अबाउट द नेम, दक्षिण गंगोत्री। इंडिया का पहला रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बनाएगा, दक्षिण गंगोत्री। तो दिस इज व्हाट यू कम अक्रॉस।
व्हाट यू सी द पर्सन हियर, है ना, सैयद जहूर कासिम, ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने भारत के टीम ऑफ साइंटिस्ट को अंटार्कटिका एक्सपेडिशन में 1981 में ले जाया गया। और 3 साल के बाद देयर आवर साइंटिस्ट बिल्ड द दक्षिण गंगोत्री, India's first research station in Antarctica, right? Even we made it before China. Even China also has a presence there. USA, Australia, many countries have research station there. और अंटार्कटिका में ओजोन का स्टडी होता है, अंटार्कटिका में एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी होता है, जैसे न्यूट्रिनो पार्टिकल का स्टडी के लिए आइस क्यूब करके वहां लैब है, ठीक है। अंटार्कटिका में क्लाइमेट, वेदर, बहुत सारी स्टडीज होता है। और अंटार्कटिका में मिलिटराइजेशन नहीं है, केवल पीसफुल यूज के लिए बनाया गया, इसलिए अंटार्कटिक ट्रीटी है। तो यहाँ पर जो है, बिफोर चाइना केम देयर, इंडिया वेंट टू अंटार्कटिका, और 3 सालों में 1984 में हमारा पहला रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री बन के डेवलप हुआ। वी डेवलप दैट। सो ये सैयद जहूर कासिम है, ही इज दैट साइंटिस्ट हु लिव दैट। इसलिए कभी यूपीएससी क्या, वी मस्ट नो द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। नाउ दिस इज दक्षिण गंगोत्री। लेकिन आज हम दक्षिण गंगोत्री यूज नहीं कर रहे हैं, इसको हमने बाद में अबेंडन किया, और फिर हमने दूसरा रिसर्च स्टेशन बनाया। वी बिल्ड द सेकंड रिसर्च स्टेशन कॉल्ड मैत्री। आई शो द फोटोग्राफ, दिस इज द मैत्री। इसमें लैब है ना, व्हाट यू सी देयर, इंडियन तिरंगा इज देयर, मैत्री हियर। यहाँ पे लैब है, वी हैव अ लैब, ठीक है। साइंटिस्ट गो देयर, इट वर्क देयर, वहां जाके काम करता है। वहां पर रहना बहुत आसान नहीं होता है, अंटार्कटिका में रहना, रिसर्च करना इज नॉट वेरी इजी टास्क, राइट। तो इनटू द अंटार्कटिका, डीप इनटू द अंटार्कटिका, वहां पर जाके जाना, फिर ऑल रिसर्च स्टडीज करना, एंड दे लिव फॉर मंथ्स, महीनों भर वहां रहते हैं साउथ पोल में। तो दक्षिण गंगोत्री हमने अबैंडन किया। 90s में हमने दूसरा स्टेशन बनाया, मैत्री, व्हाट यू सी राइट नाउ, है ना। ये इंडिया का यहाँ पर है, और इसके अंदर लैब होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तरह तरह का स्टडी किया जाता है, राइट। देन इसके बाद इंडिया ने तीसरा बनाया, थर्ड बनाया, भारती, ठीक है। मैं आपको भारती दिखाता हूँ, ये भारती है। 2012 में, 2012 में एक अंटार्कटिका में जगह लार्समन हिल बोलते हैं, ये जगह है। 2012 में लार्समन हिल है, एक पहाड़ है, बर्फ से ढका हुआ है, वेर अंटार्कटिका में। तो देयर, ये इजी टास्क नहीं होता, बहुत टाइम लगता है। आपको पता है कोई भी बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में कितना टाइम लगता है। सो देयर आवर साइंटिस्ट डे एंड नाइट वेंट ऑन टू कंस्ट्रक्ट दिस पर्टिकुलर लैब। और ये मैत्री से और हाईटेक है, यू कैन सी हियर। यहाँ कंफर्टेबली साइंटिस्ट कैन लीव, है ना। और इसको थोड़ा ऊंचाई में बनाया गया है। एक तो क्या है, ऊंचाई जगह है, हिल है, लार्सन हिल। उसमें भी अगर आप देखो, ये रेज प्लेटफॉर्म पे है ना, इसको रेज प्लेटफॉर्म पे बनाया गया है। क्योंकि वहां क्या होता है, बर्फ का लेयर बढ़ता जाता है अंटार्कटिका में। अब जैसे अगर आप मैत्री को आप देखें, तो मैत्री यहाँ पर है, प्लेन एरिया पे है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं भारती में, तो इसको रेज करके किया गया, इसको थोड़ा ऊंचाई पे किया गया, ठीक है। 3-4 फ्लोर्स का वहां पर है, एंड इसकी बड़ी सेटिंग है, इसके अंदर सारे कंफर्ट है, लिविंग रूम है, बेडरूम है ना, सारी चीजें, फूड। और यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जिसपे साइंटिस्ट कैन सर्वाइव, है ना। वो विंटर कंडीशन जो बाहर का होता है, वो -35-40 डिग्री सेल्सियस जाता है, दैट कैन सर्वाइव। तो 3 कहाँ बनाया गया, साउथ पोल में। पहला हमारा दक्षिण गंगोत्री, फिर मैत्री 90s में, फिर 2012 में इंडिया का भारती है। तो नाउ वी आर यूजिंग भारती, ठीक है। तो दैट अगेन कम्स अंडर अर्थ साइंसेस, व्हाट यू सी राइट नाउ। तो आई एम यूजिंग ऑल द विजुअल सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हियर, ठीक है। देन इंडिया ऑल्सो वेंट टू नॉर्थ पोल, आर्टिक, है ना। We also went for the Arctic research, North Pole research, and we have also built a station there called Himadri. क्या नाम है स्टेशन का, हिमाद्री। आई शो यू द फोटोग्राफ, दिस हिमाद्री, राइट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट नॉर्थ पोल के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, स्वालबार्ड। नॉर्थ पोल के पास इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आइलैंड, राइट द नेम हियर,
Svalbard. Now this Svalbard island that comes under Norway. एक है नॉर्वे जो कि यूरोप का मेन लैंड रहता है. आर्टिक कहाँ है? आर्टिक ओशियन है. ठीक है. आर्टिक ओशियन में आर्टिक इज नॉट कॉन्टिनेंट, ये याद रखना है. अंटार्कटिका इज अ कॉन्टिनेंट एंड लैंड मास. आर्टिक इज प्योरली आर्टिक ओशियन विथ फ्लोटिंग मास ऑफ आइस. लेकिन आर्टिक में ही एक छोटा सा आइलैंड है दैट कम्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, स्वालबार्ड. And with the agreement with Norway, right, mutual agreement, this is what India's Himatri is there. ये हमने हिमाद्री बनाया. ये हमारा आर्टिक रिसर्च के लिए. अगेन वहां पर स्टडी किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज स्टडी, अदर एस्पेक्ट्स, एटमॉस्फेरिक स्टडीज, मेट्रोलॉजिकल स्टडीज, क्लाइमेटोलॉजी, ये सारे स्टडी किया जाता है. एंड आवर टीम ऑफ इंडियन साइंटिस्ट गो देयर एंड लिव देयर. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है. देन एज यू कम अक्रॉस, ठीक है, ये चीजें यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है. ये जो आप देख रहे हो इंड आर्क, right? What do you see here? The name IND-ARC, India Arctic Experiment, right? Almost 7-8 years back, वहां पर हिमाद्री में, वहां पे क्या नॉर्वे में जोड होता है, जोड. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज जोड? FZORD. You will find there anyone in the classroom, anyone who is attending there. What is जोड? जोड फोर्ड बोलते हैं वहां पर. एनी आइडिया? ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, राइट? कैन anyone brief me what is जोड? श्रेया, व्हाट इज जोड? सुलग्ना, अभी आपका ज्योग्राफी भी चल रहा है, तो कैन टेल मी व्हाट इज जोड? Those who are in the YouTube they can also tell me here कि जोड क्या होता है. सर आई डोंट नो सर, बट यूपीएससी में इसके बारे में क्वेश्चन आया था. हाँ बिल्कुल वही है, क्योंकि अर्थ साइंस जो है आपको ज्योग्राफी से लिंक करना होगा. अच्छा ठीक है, जस्ट 1 सेकंड. यूट्यूब में देयर इज अ पर्सन कॉल्ड नीलिम नाथ गर्ग, NN गर्ग. मैंने वहां पर जूम का लिंक दिया है. जस्ट क्लिक ऑन द जूम लिंक, यू विल डायरेक्टेड देयर. अगर मैं शेयर मैंने कर दिया है, ये लिंक है उसको जूम मीटिंग में आप, एंड देयर इज अ आईडी एंड पासवर्ड आल्सो गिवन. आप उसके थ्रू जूम ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है. हाँ हाँ श्रेया, तो एनीवन? सुलग्ना, व्हाट इज जॉड? सुलग्ना, Sir, I don't know this. you know what is a creek? Creek. Anyone? You know creek? What is creek? Creek क्या होता है? creek क्या होता है? Sir, a place from where sea enters into land mass. Yes, that's right. Small, narrow. Where the narrow creek होता है, that's very narrow, Yes. very narrow creek will be there through which the sea water can enter there. वैसे ही जॉड होते हैं नॉर्वे में. That's kind of, I show you here. If you do the search, you will get the zod, and FZORD बोलते हैं. There's again the sea water which enters there. तो what we did here, you can see here, हमने ये इंस्ट्रूमेंट जो है, जो अभी आपने देखा इंडॉर्क, ये इंस्ट्रूमेंट है, उसको हमने वहां पे इमर्स किया. दैट वी हैव पुट इनसाइड द वाटर. यू कैन सी दिस इज द, दोनों साइड में हिल है, माउंटेन है, एंड यू हैव ओशियन वाटर. यहाँ ओशियन वाटर है. तो दैट ओशियन वाटर में इसको इमर्स किया गया है. इट हैज बीन जस्ट पुट इनसाइड देयर. इसका मेन पार्ट है कि टू मेजर द टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट, टेम्परेचर स्टडी, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं हमारे मॉनसून
ग्लोबल क्लाइमेट से लिंक है कि जो भी चेंजेस आर्टिक में हो रहे हैं, that we can connect with other part of the global climate, and we can even connect with our own climate, India's climate. And UPSC has asked direct question in prelims exam. That is called as a IND-ARC experiment. Right? Again, Ministry of Earth Sciences that comes here. ठीक है. एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगा. I will tell you about this one. Can anyone tell me what is this? This photograph. This is a very, very important one. If anybody can tell me here, what do you find here? Yes. सुलग्ना, मैंने क्लास में बताया भी था. Can you tell me there? What is this? What you can see here? Shubham, आपने आंसर सबमिट किया है. I'll give you my feedback also there. Yes, Shubham. Okay. क्या है? What is this? Can you tell me? What do you see here? I don't know. I don't know, sir. सुलग्ना, I've mentioned in the classroom. मैंने बायोडाइवर्सिटी के टाइम में बताया था, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में. Whenever I take the topic there, biodiversity conservation. Sir, it will be a storage house for the. Yes, very true, very true. It is basically seed bank. Yeah, seed bank. Yeah, this is a global seed bank. I'm writing there. Global, the world's biggest seed bank is there. Seed vault is there. इसको डूम्सडे भी बोला जाता है. डूम्सडे seed bank. What you see here, under this earth, ये जो part है, and you can see here, Svalbard, I'm zooming the name there. आप दीवार में आप देख सकते हो. Right? This is a Svalbard global seed bank. Right? You can see this one, global seed bank. है ना? Svalbard global seed bank. The global seed bank, this is what you can find there. Right? Global seed bank, you can see here. ये लिखा है ना, दीवार पे लिखा हुआ है. ये under the ice, ये जो layer है, under this ground, many countries have contributed their seeds. India ने भी किया है. India has also given there. Right? India has also submitted here. इसको डूम्सडे इसलिए कहा जाता है कि if there the natural calamity disaster, let's say climate change impact, maybe the temperature and all will rise, and if there's any big catastrophe, then these seeds can be used in next civilization part. तो वहां पर है, इसको स्टोर किया गया. Now what you see here, इंडिया में भी किया गया है. लद्दाख. In India, we have Ladakh, Changla. You can see there's army base also there. Right? It's a mountain pass. 17,688 feet or 5,360 meters above mean sea level. Right? There, DRDO, Defense Research Development Organization, has created India's Doomsday. What you see here is India's Doomsday. ये भी seed bank है. And this is second biggest in the world. After Svalbard seed bank, second biggest comes this Changla seed bank maintained by DRDO, Defense Research Development Organization. Right here, we are also putting this, and you can see temperature here. In Ladakh, right, the temperature is -4 to 40 degrees Celsius. And it can hold over more than 5,000 seeds managed by DRDO. Right, ये बैकअप है यहाँ पर जो है ना, is one day serve as a backup to Svalbard global seed bank. कि वहां पर जब हो जाएगा तो remaining seeds can be stored here. Right, that is where the Ladakh comes there. Right, so again this is a part of earth sciences. This again that comes under earth sciences. Right, that's what comes here. Then again earth sciences में what is next thing comes? Himansh. Another very important landmark development of India's earth science is the
another station called Himansh. कहाँ पर है? This is in Himachal Pradesh. Let me write here. This is what you see here. This is the Ministry of Earth Sciences. Right there we have done. So what is here? Himansh is basically a scientific lab. Scientific lab, right? Which is now working, right? That is at Lahore and Spiti. कहाँ है Lahore and Spiti? You would have read about this name, Lahore and Spiti. It's a very important place, Lahaul, Lahore and Spiti. That is in Himachal Pradesh. Again, this is a very high area, 13,500 feet above sea level, mean sea level, in Himachal Pradesh. There's a lab called Himansh, right? And what we are doing here? Here we are studying study of climate change impact, right? Study of climate change impact. That is what we do. Study of climate change impact that we are having in the Himansh lab. तो ये बहुत क्लियरली समझना है. हिमाद्री हमारा रिसर्च स्टेशन कहाँ पर है? कहाँ लोकेटेड है हिमाद्री? Anybody in the classroom can tell me where we have Himadri? Where is Himadri? North Pole. Yes. South Pole. ठीक है. South Pole or North Pole? Where is Himadri? Is it South Pole or North Pole? North Pole. North Pole में है ना? North Pole में है. हाँ वही तो ऐसे ना कंफ्यूज हो South Pole गया. में कौन कौन सा है मुझे बताओ. पहला दक्षिण गंगोत्री, ठीक है. फिर इंडिया ने क्या बिल्ड किया? मैत्री. थर्ड क्या बिल्ड किया? भारती. राइट. आर्टिक और नॉर्थ पोल के रिसर्च के लिए हिमाद्री है, राइट. मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ. और हिमांश जो है, हिमांश क्या है? हिमाचल प्रदेश में. अगेन दिस इज अ लैब टू स्टडी व्हाट? स्टडी ऑफ क्लाइमेट चेंज, स्टडी ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, melting of Himalayan glaciers. Because of the global warming and climate change, these glaciers are getting melting very, very fast. Again, the scientists use the technology. Like a drone ka use ho raha, drone. Satellite mapping. Drone, you all know, unmanned aerial vehicles. Drone and all this being used. So they're trying to study how that impact being felt. और उसके क्या क्या interconnected areas है. अब जैसे हिमांश was in the news 4-5 years back. अभी तो यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है. Suppose that even question doesn't come in the prelims exam, but you get in GS1 paper, geography में अगर कुछ glacier related question आता है, or let's say GS3 paper where science and technology, उसके related कुछ आता है, then that this all you can give as an example. आप वहाँ example दे सकते हैं, ठीक है. तो ये सब पोलर साइंस के अंदर आते हैं. पोलर, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, हिमालयन ग्लेशियर्स, ये सारे स्टडीज में आते हैं. तो ये सारे अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के थ्रू हो रहे हैं. तो ये पार्ट पता होना चाहिए, राइट. और ये बड़ा अननोन एरिया है. मैंने आज का सेशन क्यों अर्थ साइंस का रखा है, उसका रीजन क्या है कि अर्थ साइंसेस इज अ वेरी नेग्लेक्टेड एरिया. ऑल्दो इट कम्स इन ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, मेनी एरियाज कम्स देयर, ठीक है. तो उसको कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. एंड माइट बी पॉसिबल, हु नोस, यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन 2024 एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और वो सिंपल क्वेश्चन होगा. You can easily score marks, right? That is what I've come across there. Then now see here further. This मैंने क्लास में बताया था, समुद्रयान, मत्स्य 6000, right? There's an institution called NIOT, National Institute of Ocean Technology, right? That is located in Chennai, Tamil Nadu. They have developed this submersible. ये manned submersible है, right? What is manned submersible? Human beings can be kept inside, which can go deep into the ocean. ये deep ocean study के लिए है ना. What is your deep ocean studies? That is where this Samudriyan comes. Yes, Maya has raised the hand. Yes, Maya, you can ask me question. Maya Shankar, आप unmute कर लीजिए. I can hear your voice. Maya, you raise your hand. Can you unmute yourself? Maya?
ओके, एनीवे, मानक, माया, कैन यू हियर मी? आप उसको अनम्यूट कर सकते हैं, यू हैव रेज्ड योर हैंड, सो इफ यू वांट टू आस्क एनी डाउट यू कैन आस्क मी. Okay, not a problem there. So now what I'm coming here, Samudrayan, a deep ocean mission. Studying about deep ocean, ocean के अंदर काफी सारे resources हैं, living and non-living, right? Living में आ जाता है organism वगैरह वहां पर है, biodiversity part भी उसमें आता है. Non-living can be very important thing. One is called polymetallic nodules, PMN, right? What you find here, PMN. So I'll be coming to that PMN part of it, polymetallic nodule. Let me talk this one, you can see. ये ओशियन के अंदर होता है, इसके अंदर क्रिस्टल्स हैं, सल्फाइड, कोबाल्ट, मैंगनीज, निकल, what you all see here. This we can take it from the deeper ocean. हम निकाल सकते हैं इसको. ये जो आप देख रहे हैं, इसमें मेटालिक, यू कैन से लाइक ओर, जैसे हम माइनिंग करते हैं, ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स वगैरह हैं. What you see this photograph. This is called polymetallic nodule, PMN. Many of the cobalt sulfide, nickel, and all those kind of metals are found there. So what is very important about deep ocean mission? Ki we can go to the right inside the ocean, 5,000 meters, 6,000 meter deeper ocean, even continental shelf में, and we can mine it out. तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट रेयर मिनरल्स हैं वो हम निकाल सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज, काफी जगह पे हो सकता है. दैट कैन बी पॉसिबिलिटी देयर, राइट? नाउ इफ यू सी हियर फर्दर, इफ यू लुक एट दिस वन, तो बिफोर आई गो टू दिस वन, एक ये चीज है, लेट मी कम अक्रॉस देयर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस? एनी आइडिया? You can do the guesswork also there. Any idea? Anyone? Pritam, Sulagna, Shubham, कोई भी मुझे बता दे. What does photograph depict? What it looks like? कैसा दिखता है ये? Yes. कॉटन टाइप्स कुछ लग रहा है. Ice जैसा दिख रहा है ना? Like a snow and ice, right? हाँ. Any idea? ये भी ओशन के अंदर पाया जाता है. Is also found within the ocean. कोरल्स. Not coral. It's not a coral. ये ice है, snow है, but it's very very important. ONGC, you know, Oil and Natural Gas Corporation of India. हाँ. उनके द्वारा किया गया ये फोटोग्राफ है. And again, it is mined out from the ocean. ओशन से माइनिंग किया गया है. Yes. Shreya, can you guess here? What could be that? Dry ice. Dry ice. Okay, good. Anything else? Yes. I'll now give you the name. UPSC में क्वेश्चन आ चुका है. It is called gas hydrate. Gas hydrate. इसको मीथेन हाइड्रेट भी बोला जाता है. It is rich in methane gas. You know methane gas, natural gas. It has a methane gas. मतलब क्रिस्टल फॉर्म में होता है, फ्रोजन विद इन द आइस, द वाटर विच इज फ्रोजन, उसके अंदर मीथेन गैस है. अब इसका 2-3 पॉइंट आ रहा है. व्हेन ओशन गेट वार्म, है ना, ओशन की वार्मिंग हो जाए तो ये जो आइस के अंदर मीथेन गैस है, आइस विल मेल्ट. क्योंकि डीप इनटू द ओशन क्या होता है, देयर इज नो सनलाइट, टेम्परेचर बिकम्स वेरी वेरी लो. तो अंडर लो टेम्परेचर प्रेशर ये आइस बन जाता है और उसके अंदर मीथेन गैस होता है. इसको मीथेन हाइड्रेट या गैस हाइड्रेट बोलते हैं. नाउ इमेजिन बिकॉज ऑफ वार्मिंग ऑफ ओशन, तो दिस आइस विल मेल्ट and the methane gas will come out. And you know methane gas is a greenhouse gas. Methane is a greenhouse gas. और अभी आपको पता है COP28 में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 यूएई क्लाइमेट चेंज समिट, वहां क्या चीज की बात हो रही है, नॉन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस की बातचीत हो रही है.
और वहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जीएसजी है, ग्रीन हाउस गैस, जिसको गवर्नमेंट वांट टू कंट्रोल, दैट इज मीथेन गैस. तो मीथेन गैस, इट कम्स फ्रॉम पैडी कल्टीवेशन, राइस कल्टीवेशन, फ्रॉम एनिमल जो होते हैं कैटल वगैरह, एनिमल हस्बेंड्री. एंड व्हाट इज अनदर सोर्स? ओशियन. वेटलैंड से भी आता है, ओशियन से भी फॉर्म होता है. तो अब ये गैस हाइड्रेट जो है, इसका मैं एक कनेक्शन मैंने बताया, क्लाइमेट चेंज. दूसरा क्या है? वी कैन टेक आउट दिस गैस हाइड्रेट फ्रॉम द ओशियन एंड फ्रॉम देयर वी कैन एक्सट्रैक्ट मीथेन गैस. अब इमेजिन करो आप कि हम डीप ओशियन माइनिंग करें, वहां से ये गैस हाइड्रेट को निकालें, जैसे इंडियन ओशियन बेसिन वगैरह है, वहां से हम निकालें, और फिर इसी को हम क्या करें, इससे इसको मेल्ट करके मीथेन गैस निकालें, राइट, नेचुरल गैस. एंड मीथेन इज कंबस्टिबल गैस. इसका वेरियस एप्लीकेशन है, सीएनजी वगैरह में यूज होता है, इवन फॉर पावर जनरेशन, कुकिंग, कहीं भी मीथेन गैस हम यूज कर सकते हैं. व्हीकुलर के लिए भी कर सकते हैं, व्हीकुलर यूज एज अ फ्यूल के केस में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि अर्थ साइंस क्यों इंपॉर्टेंट है, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. दिस व्हाट यू कम अक्रॉस. Again, from the ocean, an Indian Ocean has a deposit of gas hydrate. ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. कई बार न्यूज में आ भी सकते हैं, नहीं भी. आज ये है पॉलीमेटालिक नोड्यूल फाउंड विद इन द ओशन. ठीक है. सो मत्स्य ये जो है, दिस पर्टिकुलर समुद्रयान विल बी फाइंडिंग आउट ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग. नाउ व्हाट इज अनदर थिंग हियर? काबरती. इफ यू कैन सी हियर, आई शो यू द फोटोग्राफ हियर. मिनी कॉय, ये जो पाइप देख रहे हो आप, 2 पाइप्स आर गोइंग देयर, एंड दिस इज स्ट्रक्चर ब्रिज जैसा दिख रहा है. यू कैन सी दिस इज द कोस्ट. ये कोस्ट है, ये ओशन है. Lakshadweep comes into which ocean? Which sea? Arabian Sea. And you can see this is the bridge on the ocean made there. And you can see this one, the building. This is basically desalination plant. The people who live in Lakshadweep, they require drinking water. They require drinking water. So National Institute of Ocean Technology, that Chennai-based institute, has developed a technology called LTTD. यहाँ जो टेक्नोलॉजी है, ये चीज है LTTD. Now what is the full form of LTTD? I write here. LTTD, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसको बोलते हैं लो टेम्परेचर थर्मल desalination plant. Is a very important technology which has been developed. LTTD, low temperature thermal desalination method is there. इसमें ये किया जाता है, सॉल्ट को रिमूव किया जाता है सी वाटर से. इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आता है, व्हाट आई एम राइटिंग हियर. इट इज यूज ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी कॉल्ड ओटेक, OTEC, ओटेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन. नाउ व्हाट यू सी हियर, ये जो आप देख रहे हो, द पाइप, इसमें एक से वार्म सरफेस वाटर होता है, दैट इज टेकन फ्रॉम सरफेस. और दूसरे पाइप जो है, सेकेंड पाइप, व्हाट यू सी इज अ कोल्ड डीप वाटर. कोल्ड डीप वाटर ऑफ ओशियन होता है. वार्म वाटर सरफेस से लिया जाता है, कोल्ड वाटर डीपर ओशन से लिया जाता है. इट क्रिएट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. 20 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है. अब ये क्या किया जाता है, ये दोनों पाइप को, बोथ द पाइप goes to this what you see, this plant, and it uses a volatile liquid, जैसे अमोनिया, लिक्विड अमोनिया समथिंग. तो इसमें क्या होगा, द मोमेंट वार्म वाटर गोज, ठीक है, इसको प्रेशराइज किया जाता है, इसको प्रेशराइज करते हैं वैक्यूम चेंबर में. तो व्हाट हैपन,
this warm water evaporate, become steam. ठीक है, फिर ये दूसरे चेंबर में जाता है, उस चेंबर को ठंडा किया जाता है. इट इज मेड कूल्ड बाय पंपिंग कोल्ड वाटर ऑफ ओशन. तो क्या होता है, स्टीम कन्वर्ट इनटू प्योर ड्रिंकिंग वाटर. मैं फिर समझाता हूं क्या होता है उसमें. एक पाइप से सरफेस वाटर लिया जाता है, सी वाटर. ठीक है, उसको जो आप देख रहे हो, बिल्डिंग देख रहे हो, वहां पर एक मतलब चेंबर होता है, उसको वैक्यूम होता है, प्रेशराइज किया जाता है ताकि उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए वाटर का और वो स्टीम बन जाए. Salt will be left behind. Salt will be left behind. And then the steam will go to another chamber. And that chamber is kept cold by passing the cold water from deep ocean से pipe से pass होता है. Second pipe, what you see, cold deep water. तो उससे क्या होता है कि that chamber remains cooler or colder. तो the moment जब से steam enter करता है, तो that will condense into pure drinking water, potable water. And that water is supplied to the people who live in the island. आइलैंड में जो रहते हैं उनको प्रोवाइड करता है. इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ओटेक. ठीक है, कहां यूज किया जा रहा है, लक्षद्वीप में. अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ अर्थ साइंस. नाउ यू कैन सी हियर, कैन यू सी द ब्रिज अगाती, एंड यू कैन सी हियर, दिस इज द, व्हाट यू सी दिस वन, दिस इज द desalination plant. What you see this aerial view, desalination plant, right? ये इंडिया में हो रहा है. As you can see the date also there. अब रिसेंटली यहाँ एक और चीज है, कावारती. Now let's look at here. Can you see here? NIOT, National Institute of Ocean Technology, is a desalination plant जहां पे प्योर वाटर बनाया जा रहा है. And what technology being used? OTEC, OTEC, OTEC technology. ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम ऑल साइंसेज इफ यू लुक एट, ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉलीमेटालिक नोड्यूल मैंने बताया, इसको बोलते हैं PMN, polymetallic nodule, PMN, which again from the ocean. This I've already mentioned, gas hydrate, right? Gas hydrate comes into this. So deep ocean mission has got a lot of relevance, right? It has got a lot of relevance there. Any doubt you have, any question? Then I'll come to something else. ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के लिए. You might get question in the prelims as well as mains exam. That's what I have come across with this particular session on earth sciences. Ministry of Earth Sciences का development जो है. Are you all able to understand? Pritam, Shreya, Ritika, Ankita. Yes, sir. हाँ, YouTube चैनल में भी देख लेता हूँ कौन लोग हैं वहां पर. अच्छा, माया शंकर, he was there but again is now in YouTube channel there. Yes, Matsai submersible vehicle, very true, very true. Maya, you are very correct. Norway again, very correct. Then Nilimp is there. I have put in the chat box. Nilimp, there is a chat box है. निलिम्प नाथ को लिंक नहीं मिल पा रहा है, मैंने ऊपर लिंक दे दिया है जूम मीटिंग का. और एल्स यू कैन कम टू टेलीग्राम चैनल, वहां पर दिया हुआ है. देयर यू माइट फाइंड दैट. ठीक है, इज इट क्लियर हियर एवरीवन? सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल जस्ट go to some kind of achievement of Ministry of Earth Sciences there. ठीक है, then I'll come to your answer. आपका जो आंसर है, प्रीतम, आपका मैसेज मुझे मिल गया, वो जो स्पीसीज वाला जो है जो आपने species बोला, हाँ जो स्पीसीज का है आपने जो बोला है, वो मुझे मैसेज मिल गया है. मैं उस पर वर्कआउट कर रहा हूँ. मैं आपको मिल जाएगा बिल्कुल, ये सारा मैं शेयर कर दूंगा मैं. ठीक है, दैट आई विल डू दैट. So and the same file जो भी same file जो है, the same file I will also provide you there. ठीक है, this file टेलीग्राम ग्रुप पे स्पेसीज का लिस्ट I'll share, मैं share कर दूंगा मैं.
कोई दिक्कत नहीं है उसमें, that I'll do that one. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक everybody is able to understand? और साइंस इंपॉर्टेंट है, एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चंस इफ इट कम्स इन द एग्जाम तो वो सॉल्व होना चाहिए, दैट हैज टू बी सॉल्व्ड, राइट? ठीक है, नीलिम को मैंने बोल दिया कि वहां पर ऑलरेडी आई हैव गिवन लिंक, मैंने वो चैट बॉक्स में लिंक दिया है, आप उसमें क्लिक करेंगे तो, या जूम लिंक आप ओपन कीजिए, आपके पास अगर ऐप है तो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है तो आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन इन दैट वे। ठीक है, क्लियर हियर एवरीवन? So let me do one thing here. I'll come to that part again. What I'm coming here, or science का ही है, just a small bit. What I want to cover here, यहाँ मरीजों और साइंसेस कुछ अचीवमेंट है पीआईबी में, है ना? वेरी गुड पीआईबी वेबसाइट, जैसे हर साल में अचीवमेंट आता है, और एक पिछले 7-8 सालों का भी अचीवमेंट है। इसमें सारी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, some part is important but others are not very important. I'll highlight this one. ठीक है, again I'll share this one, you'll be able to see that. Now let's look at here. ठीक है, अभी ये आ गया, आपको एग्जाम से पहले हमेशा याद रखना है, गो टू द अचीवमेंट ऑफ मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं, वॉट एवर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट यू हैव एंड वॉट एवर देयर अचीवमेंट्स आर देयर, ईयर एंड रिव्यू होता है, एंड वहां से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाता है। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का है, अब यहाँ पर ये चीज है, तो कुछ जो लास्ट ईयर, ठीक है, 2022 का जो है मैं हाईलाइट करता हूँ, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब जैसे ये दिया हुआ है डॉपलर वेदर रडार, ये होता है विंड डायरेक्शन वगैरह, है ना, रेनफॉल वगैरह, दैट इज ऑल स्टडीज देयर। अब कितने डॉपलर रडार लगाए गए हैं, कहाँ लगाए गए हैं, कितने पैसे लगे इसके लिए, हाउ मच फंड वाज गिवन, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट नो द टेक्नोलॉजी, DWR, डॉपलर वेदर रडार, इससे स्पीड, वेलोसिटी ऑफ विंड, ऑल दोस काइंड ऑफ पैरामीटर्स को मेजर करते हैं। ठीक है, देन यू नो दैट साइक्लोन, एवरी ईयर यू नो बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, साइक्लोन कम्स देयर। अभी कौन सा साइक्लोन आया हुआ है तमिलनाडु में, पांडिचेरी में, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइक्लोन? मुचैंग मुचैंग आया है। यू नो नेम्स ऑफ साइक्लोन जो है, यस, माया हैज जॉइंड देयर। हाँ माया, बताओ ये कहाँ से नाम आया, विच कंट्री हैज गिवन दिस नेम, मुचैंग, तमिलनाडु एंड पांडिचेरी। नाउ ऑलरेडी वहाँ इवैक्यूएशन वगैरह किया गया है। You know what happens in the ocean? Sorry, sir. Countries which are surrounding the oceans, they give a list of names, right? And one by one it goes into that. You can search and can tell me, search करके बता सकते हो, क्योंकि अभी मुचैंग न्यूज में है। You know that उससे पहले तितली, तितली है ना, then हुदहुद, फाइलिन, ऐसे सारे आए हुए हैं। Then you know बिपोर जॉय, अरेबियन सी में, गुजरात was there. Yes, Pratham. Which country has given this name? Muchang. Nemo cyclone. Searching. Yes, this is GK question. I'm just asking a GK question there. So now you can understand there. Cyclone track forecast. ये बहुत important. Myanmar. Yes, wait, बोले ना. They're given by the countries surrounding the Indian Ocean. Right? Burma, Myanmar, Muchang. Now look at here this one. This type of cyclone, when it arises on the ocean, Bay of Bengal and all, it also give accurate forecast of wind speed, direction, movement, और जब लैंडफॉल होता है, what is landfall? जब साइक्लोन कोस्ट में आता है, that is given accurately by the Ministry of Earth Sciences, IMD, Indian Meteorological Department. तो यहाँ पर दिया हुआ है साइक्लोन फोरकास्ट वगैरह, एरर कम तो 159 किलोमीटर तक फ्रॉम द कोस्ट से उसका एक्यूरेट फोरकास्ट किया जाता है। मोचंग की केस में भी हो रहा है अभी। ठीक है, सीवियर वेदर जैसे होता है ना, साइक्लोन, हेवी रेनफॉल, और अब नया चीज आ रहा है हीट वेव, सी हियर, हीट वेव, कोल्ड वेव, थंडरस्टॉर्म,
This is all a weather forecast. Fog, all this weather forecast, that is all done through instruments, and we use number of devices, and we use super computers to give the prediction. तो यहाँ पे अचीवमेंट को काउंट किया जा रहा है, राइट. सिटी फोरकास्ट होता है, यू कैन सी, लाइक दिल्ली में आपको पता है बैड वेदर कंडीशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI, एंड द सीवियर एयर पोल्यूशन. तो देयर आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस लेंड द सपोर्ट. अगर आपको पता हो, मैंने क्लास में बताया था सफर. डू यू रिकॉल सफर? सुलग्ना, प्रीतम. वन इज AQI and second is suffer, SAFAR. What is suffer? ये मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया भी था. What is suffer? Ankita, they're also in Bhubaneswar. I mentioned in my classes there. What is suffer? SAFAR. System air quality determination का कुछ program Correct. था. is a basically system for air quality forecast and research. Now this is given by IITM, Indian Institute of Tropical Meteorology in Pune. क्या होता है? वेदर के अकॉर्डिंग एयर क्वालिटी ऑफ 4 cities, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एंड पुणे, 3 से 4 दिन एडवांस, 3 to 4 days in advance, this based on weather conditions, what would be the air pollution, particulate matter, PM, suspended particulate matter, PM 2.5, PM 10, and depending on summer, winter, rainfall, rainy season, whatever the condition, 3 to 4 days in advance, that data is given to the public. ये किसके द्वारा किया जाता है? IITM. And IITM comes under which ministry? Ministry of Earth Sciences. तो यही चीज है, when you read current affairs, when you come across current affairs, you have to connect all this kind of areas. That's what this session becomes very important. Earth Sciences, what I'm taking presently today, it becomes really very, very important for that. उसमें जो कुछ भी आप पढ़ते हो न्यूज में, अब जैसे सफर बताया, सिस्टम फॉर एयर क्वालिटी फोरकास्ट एंड रिसर्च, 4 cities कवर होता है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद एंड पुणे. 3 to 4 days in advance प्रेडिक्ट कर दिया जाता है बैड एयर क्वालिटी, राइट. Again, Ministry of Earth Sciences comes there. The role comes. So you'll find here, now see here, this one. I'll highlight this. Look at here. A very high resolution 400 meter air quality warning system. Right? This air quality warning system. Again, this has been done by the scientist. Then you can see South Asia flash flood guidance system. Flash flood. You know that Sikkim में flash flood, glacier lake outflow, or let's say sometime rain, heavy rain, monsoon, river overflow, too much of water, and sudden, all of a sudden. कई बार क्या होता है? Cloud burst, sudden water, flash flood. तो उसके लिए again system technology which can help forecast as well as disseminate information to government agencies, rescue agencies, NDRF and team and all battalions जो होते हैं, then disaster management authorities को, that has been given, right? And you can see here this one, air quality here, air quality management system in the National Capital Region, NCR. You know that burning of stubble and other factors which contribute to Delhi air pollution during the winter. So again, that is done through this. GRAP, sir, GRAP. GRAP का जो आता है वहाँ बिल्कुल सही, ग्रेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है. Then एग्रो जो है, एग्रीकल्चर बेस्ड जो है, स्टबल बर्निंग वगैरह जो होते हैं उनको डिटेक्ट करना, राइट. Then you can see atmospheric research test bed, thunderstorm, lightning, उसके बारे में स्टडी करना, राइट. ऑल दिस हैव बीन डन इन द 2022. ठीक है. जो भी ऐसे फोरकास्ट मॉडल होता है, साइंटिस्ट डेवलप दिस कम्स इनटू दैट, राइट. ग्राउंड स्टेशंस होते हैं, सारा कुछ होता है,
This is what you find here. GIS based application होता है. Web based GIS. What is GIS? Geographical Information System. डिजिटल फॉर्म में जो है कोस्टल एरियाज में. Again, all studies, all data, this all are shared there. You can see here coastal observatories, coastal water quality. कोची में किया गया, केरला में किया गया कि वाटर पोल्यूशन, वाटर की जो सैलिनिटी है, वाटर क्वालिटी, दैट इज बीइंग डन. देन आइलैंड्स एंड कोस्टल एरियाज, वेब बेस्ड जीआईएस एप्लीकेशन वहां पर है. देन यू नो समटाइम इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. नाउ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंडिया एंड नॉर्वे कोलैबोरेशन. मैंने बताया अभी नॉर्थ पोल स्टडी, आर्टिक स्टडी, स्वालबार्ड, मरीन स्पेशल प्लान. लुक सी हियर, marine areas, and is in collaboration with Norway. Mapping part, again comes mapping, right? Again for marine areas, sea and ocean, this given here. Now see here, एक बहुत important चीज है, मैं लिख रहा हूँ, digital coast India decoin. Again क्या है? GIS. क्या है? तो GIS सैटेलाइट के हेल्प से उसका जानकारी मिलता है. जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम. इसरो के पास कई सारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं. दे कलेक्ट द डेटा एंड गिव इट टू द कंप्यूटर सिस्टम एंड दैट जनरेट द मैप, ग्राफ्स, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन. तो वो एप्लीकेशन है डीकॉइन, डिजिटल कोस्ट इंडिया. एंड यू कैन सी यहां पर क्या क्या है, क्या क्या शोर लाइन चेंजेस. कई बार यू नो दैट समटाइम इरोजन, coast can be eroded by wave. Then you know coastal hazard, cyclone, wind, storm. Then again ecosystem, you know that mangrove forest, sometimes coral reef. All this information can be brought and can be given to the agencies or people at large through this application called Digital Coast India Decoin. डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. पीआईबी से कुछ भी ऐसे अचीवमेंट होते हैं, 1 or 2 क्वेश्चन पक्का आता है, राइट. अनदर देखो, आजादी का अमृत महोत्सव, दैट इज अ स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर कैंपेन. क्लीन ओशन, you know that now ocean is getting affected because of maritime activities, oil spill, pollution, you know, garbage, dumping of plastics, microplastic. तो क्लीन सी प्रोग्राम है, दिस हियर क्लीन सी प्रोग्राम, स्वच्छ सागर. द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज स्वच्छ सागर क्लीन सी प्रोग्राम. And we are collaborating with the international organization to clean up our beaches, coastal areas, beach, and also the ocean part. है ना, क्लीन अप किया जा रहा है. जुहू बीच, यू नो, महाराष्ट्र में, वहां क्लीन किया गया, राइट. कोरल रीफ, यू सी हियर, यहाँ स्टडी किया गया, बायोडाइवर्सिटी स्टडी, वेयर कोरल एरिया सी, रीफ एसोसिएटेड एंड डीप सी. कोरल रीफ का भी है और डीप ओशन का भी स्टडी किया जा रहा है. यू नो समटाइम डिस्कवरी न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म की खोज जो है. अब जैसे यहाँ दिया है ना, ये सागर संपदा, दैट इज अ शिप, जहाज है. ओशियन रिसर्च वेसल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ओशियानिक और ओशियन रिसर्च वेसल. जहाज होता है, समुद्री जहाज होता है, राइट. इज अ मरीन शिप हैविंग laboratory. Again, scientists on board that vessel, Sagar Sampada, they do a lot of study of ocean, right? Ocean Research Vessel, ORV, Sagar Sampada. And you can see they have found some new organisms, है ना, within जो ये नाम दिया हुआ है. EEZ जो है, इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है, यहाँ पे दिया हुआ क्रस्टेशियन, दिस नेम गिवन हियर. ये साइंटिफिक नाम दिया हुआ है, उसको याद नहीं करना है ना. ये फ्लैट वर्म, 2 फ्लैट वर्म पाया गया है, ये सारा जो नाम याद नहीं करना है, ये सब स्टडी किया गया. एंड अगेन यू नो इंडियाज साइंटिफिक एक्सपीडिशन टू अंटार्कटिका, उसको गोवा से लॉन्च किया गया.
गोवा में एक बॉडी है, देयर इज अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन which work under Ministry of Sciences is called as a National Center for Oceanic and Antarctica Research, NCAOR. National Center for Antarctic and Ocean Research, NCAOR. वहां पर वहीं से एक्सपेडिशन लॉन्च होता है अंटार्कटिका एंड आर्टिक का. दिस व्हाट गिवन हियर, राइट. अगेन नाउ सी हियर, अभी मैंने बताया LTTD, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट बेस्ड ऑन OT टेक्नोलॉजी. नाउ यू सी हियर NIOT is again established 6 more desalination plant. 1.5 lakh water per day. Again, Lakshadweep, you can see Amini is an island of Lakshadweep. Androth, another island of Lakshadweep. Chetlat, Kalpeni, Kiltan, right? And Kadmat. These are 6 islands of Lakshadweep. Amini, Androth, Chetlat, Kalpeni, Kiltan, and Kadmat. क्या वो स्टेप क्या किया जा रहा है? दिस वन, लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट using OT technology for clean water. Each of these plant will provide 1.5 lakh liter water every day. ये बिल्ड किया जा रहा है. ऑलरेडी अगाती, मिनिकॉय, कावरती वहां ऑलरेडी बन चुका है. 6 और बन रहे हैं आइलैंड्स में. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, right? Then you can see another very important one. Is a very important one, that is again deep sea microbial. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डीप सी से टेक्नोलॉजी इज बीन यूज्ड, राइट, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जैसे कॉस्मेटिक एप्लीकेशन, डीप सी बैक्टीरिया फॉर कॉस्मेटिक एप्लीकेशन, इस पर रिसर्च किया जा रहा है. कॉस्मेटिक एप्लीकेशन, ऑल व्हाट शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश, वो सारा चीज जो है ये सब डेवलप किया जा रहा है. देन बायो रेमेडिएशन. व्हाट इज बायो रेमेडिएशन? oil spill, treatment of polluted site, soil and water with the help of microorganisms, with the help of bacteria. That is called bioremediation. जैसे ऑयल स्पिल वगैरह होता है पेट्रोलियम का, तो साइंटिस्ट हैव फाउंड दोस काइंड ऑफ बैक्टीरिया, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन. डीप सी ओशन से ऐसे बैक्टीरिया खोजा गया है which can basically break down hydrocarbon or petroleum products, and we can use this kind of bacteria in the treatment of oil spill, right? Again, another very important part of achievement is there, right? Now see here, indigenously developed tsunami bottom pressure recorder, very very important one. एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया सुनामी. Tsunami happens because of earthquake within ocean. तो एक ऐसा रिकॉर्डर है, इंस्ट्रूमेंट है, which will do the measurement of earthquake under the ocean, and this will give us the idea कि अगर ओशियन के अंदर अर्थक्वेक बहुत हाई लेवल पे होता है, which can give rise to tsunami waves. Again, this forecast can be done, prediction can be done, early warning can be given. अब इसको डेवलप किया जा रहा है साइंटिस्ट के द्वारा, राइट? सुनामी बॉटम प्रेशर रिकॉर्डर, इसका नाम है सागर भूमि. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम एग्जाम? सागर भूमि. इफ यू गेट डायरेक्ट क्वेश्चन इन द एग्जाम, सागर भूमि इज व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी? ABCD. मतलब ये इंस्ट्रूमेंट है, कहां पर रखा जाएगा? बॉटम ऑफ द ओशन, ठीक है? इट विल जस्ट लाइक सिस्मोग्राफ will record the earthquake, the waves there, and it will be able to tell us based on such kind of earthquake occurrence of tsunami wave. तो ये सब चीजें कई बार करंट अफेयर मटेरियल में कवर नहीं होता है. You understand that when you read Hindu paper, Indian Express, or you look at any magazine and all, this type of thing you will not find it there. And you know that every year UPSC is doing experiment with the question paper. क्या पता आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए सागर भूमि, राइट? डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज दिस पर्टिकुलर सागर भूमि, व्हाट द एप्लीकेशन देयर, राइट? नाउ लुक एट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन. इंडियन, सी द पार्लियामेंट हैड पास्ड अ बिल कॉल्ड अंटार्कटिका बिल.
this law which government of India in terms of controlling our activities in South Pole, this bill was passed by the Indian Parliament. अब देखो ये ना, Antarctic bill was passed by the Parliament on 1st August 2022. ठीक है. Now ये क्या किया जाएगा? बिल जो है, बिल was enacted. अब देखो, as the Indian Antarctic Act, IAA, Indian Antarctic Act, in the month of August 2022. क्यों गवर्नमेंट ने इसको लॉ को लाया? यू नो दैट, आपको पता है कि कई बार इंटरनेशनल ट्रीटी, इंडिया इज अ सिग्नेटरी ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटोकॉल or agreement or convention or treaty, and we have to follow that, those kind of provisions in India. So what we do, we bring national law, we bring act. Madrid का नाम है, see look at here, comply with this one, Antarctic Treaty. India has signed UN treaty, UN का treaty है Antarctic Treaty, और Antarctica Treaty में एक प्रोटोकॉल है, see here, Madrid प्रोटोकॉल. यूपीएससी क्वेश्चन आ सकता है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है. इंटरनेशनल ट्रीटी का नाम क्या है? अंटार्कटिक ट्रीटी. उसके अंदर प्रोटोकॉल है. व्हाट इज प्रोटोकॉल? लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट, राइट? देयर इज अ प्रोटोकॉल ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट? अंटार्कटिका. अंटार्कटिका में भी बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, और वहां पर भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम हो सकता है. उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है? मैड्रिड प्रोटोकॉल है. एंड सिंस इंडिया एंड इंडियन टीम ऑफ साइंटिस्ट work in research station in Antarctica, so we must be bound by that kind of protocol. So now government of India has brought a law called India Antarctic Act. ये ना, ये चीज है, to the Antarctic Treaty and Convention on the Conservation of this Antarctic Marine Living Resources. बहुत important है ये. अभी भी यहाँ पर इसका chances है क्वेश्चन का. What is the name of the convention here? This one. Biodiversity of Antarctica is protected under a convention called Convention on the Conservation of Marine Living Organisms of Antarctica. Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. CCAMLR. इंडिया ने ये कन्वेंशन भी साइन किया है. तो इसी कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ, यू कैन सी हियर, मरीन, अंटार्कटिका मरीन लिविंग रिसोर्स. मैं फिर समझाता हूं. दो ट्रीटी है, एक अंटार्कटिक ट्रीटी है एंड इंडिया हैज साइंड अंटार्कटिक ट्रीटी. तो वी हैव टू आल्सो, एज आवर ह्यूमन एक्टिविटीज, वी शुड आल्सो प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट ऑफ अंटार्कटिका. और दूसरा कन्वेंशन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ अंटार्कटिका. दैट इज कॉल्ड कन्वेंशन ऑन मरीन अंटार्कटिका. दिस वन, कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन, यू सी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेस. ये दोनों ट्रीटी का, अंटार्कटिक ट्रीटी एंड कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ अंटार्कटिक मरीन लिविंग रिसोर्सेस, इसके जो इंटरनेशनल प्रोविजंस है, उसको कौन से एक्ट में ऐड किया गया? विच एक्ट हैज बीन एडेड? इंडियन अंटार्कटिक एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चन. ठीक है, वहां क्वेश्चन आ सकता है. मैं इसीलिए हाईलाइट कर रहा हूं ये सारी चीज. UPSC can 100% can get into that area, and you know that every year questions are always new, right? You can see here. Then again, national measures. See, India's own national measures for protecting the Antarctic environment. इसके लिए एक्ट है, right? Then again here, Arctic policy. इंडिया का आर्टिक पॉलिसी है नॉर्थ पोल के लिए. दिस कॉल्ड इंडिया एंड आर्टिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉर्थ पोल रिसर्च के लिए. And we are collaborating with Norway, right? Norway. Then again, you see biological related studies, microbial ये जो ना, biological aspect research, sea ice variability कहाँ पर? Arctic में स्टडी किया जा रहा है. Then again, microorganism study of Arctic Ocean. And again, you see the National Center for Polar and Ocean Research. ठीक है, तो वहां पर वी आर डूइंग दैट, मीटिंग डेलीगेट्स वगैरह. तो डेलीगेट मीटिंग एंड ऑल दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? डेलीगेट्स एंड ऑल दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट.
What is important? I am coming here. See here. This one. Another topic, deep ocean mission. ये मैंने बताया था मत्स्य 6000. And here Samudrayan, how many people can carry? 3 people can be carried in Matsya 6000 meters depth. Samudrayan. जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था, Matsya 6000 Samudrayan. 3 people can be inside the submersible and they can be taken to a depth of 6000 meters. Right? ये किसके अंदर आता है? Deep ocean mission. That is called manned submersible, where human being can be part of this submersible. तो इसका टेस्टिंग किया गया है, 500 मीटर तक टेस्टिंग कर दिया गया. Then you know that अभी मैंने बताया माइनिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम फॉर डीप ओशन माइनिंग. एंड यू नो दैट दिस वन, अभी मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था, दिस वन, माइनिंग ऑफ पॉलीमेटालिक नोड्यूल PMN. I've shown you the photograph of polymetallic nodule. Important minerals, cobalt, nickel and all can be extracted from PMN. तो for the deep ocean mining, तो उसके लिए वहां सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है. And that can be done from 6000 meter depth. Again, Samudrayan mission. Gas hydrate, polymetallic nodules, deep sea minerals. We can explore deep sea minerals and we can find out. Deep sea minerals को हम explore कर सकते हैं. And we can do the mining in future. यहाँ एक बहुत important law आता है, UNCLOS. United Nations Convention on Law of Seas. UNCLOS. India has signed there. तो वहां पे क्या होता है? International Seabed Authority ISA allot basin, ocean basin, ocean area explain दिया जाता है for scientific study, exploration, extraction, mining. कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक यूज 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, जिसको बोलते हैं EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. नाउ बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओपन सी, ओपन ओशन, नो कंट्री हैज गॉट सॉवरेनिटी. किसी भी देश का वहां अधिकार नहीं होता है EEZ के बाहर, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर, आफ्टर 200 नॉटिकल माइल्स. सो द एरिया ऑफ ओशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, beyond EEZ, ठीक है, to explore that part of the ocean, open sea, under UNCLOS there is a body called International Seabed Authority ISA. Now this body allocate, right, this allocate ocean bed for exploration. जैसे इंडिया में गैस हाइड्रेट, पॉलीमेटालिक नोड्यूल, कोबाल्ट सल्फाइड, इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को ओपन ओशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स एरिया अलॉट किया गया. एंड देन अगेन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज विल कैरी आउट द रिसर्च, फाइंड आउट ऑल दिस काइंड ऑफ. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चीजों को यहाँ पर कनेक्ट कर. ट्रेनिंग एंड ऑल दिस प्रोग्राम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने ये जो अभी डिस्कस किया, ये जो जितने पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, ये जो हैंडआउट में जो मैंने हाईलाइट किया है, all these topics are very very important for coming UPSC exam, whatever I've done there. I will share this document, है ना, ये डॉक्यूमेंट मैं शेयर कर दूंगा मैं. तो अर्थ साइंस could be a very gray area for question in the exam. ठीक है, ठीक है. मुझे पता है कि मैं कुछ अभी मैं व्हाइट बोर्ड यूज नहीं कर सकता क्योंकि आई एम इन द होटल रूम, राइट, आई एम इन जयपुर राइट नाउ, मैं अभी कंडक्ट कर रहा हूँ, तो अभी मैं डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसीलिए मैं PDF में मार्क करके बता दे रहा हूँ, राइट. अदरवाइज दिस अप्रोच इज नॉट वेरी इफेक्टिव, बट here I have to interact with all of you and provide you suitable topics and where you can prepare, but I'll share the document. That's what I'm underlining the areas there on the PDF, right. तो ये चीज है. तो लेट मी डू वन थिंग हियर, आई विल गिव इट दिस वन, ये आपको मैं दे दूंगा, यू विल हैव दिस, राइट. ये मैं अभी अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा मैं. आफ्टर दिस सेशन गेट्स ओवर, यू विल गेट द सेम फाइल व्हिच आई हैव अंडरलाइंड इन द हियर इन टेलीग्राम चैनल, so that you can go through it, है ना. Any doubt you have,
Then I'll come to the feedback of your answers. कोई मुझे बताओ, कोई भी डाउट है? Otherwise, I'll come to the feedback, your answer feedback. Yes, Maya, you can ask me the question. Maya, you can unmute yourself. डिसैलिनेशन प्लांट कॉस्ट इफेक्टिव है सर क्या? नहीं, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उसमें गवर्नमेंट को फंड देना पड़ता है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट. और उसका वहां पर ये भी देखना पड़ता है कि उसका कितना वायबिलिटी है. कोई भी कोस्टल एरिया में हम जब डिसैलिनेशन प्लांट लगाते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज्यादा है, लाभ ज्यादा है. क्योंकि आप सोचो 1.5 लाख या उससे ज्यादा लीटर ऑफ पानी अगर हर दिन अगर वो जनरेट कर सकता है, तो वहां जो कोस्टल एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनको पीने के लिए पानी मिल सकता है. बहुत बड़ा मतलब लाभ आप समझो कि है. तो इसमें जो भी फंडिंग है वो गवर्नमेंट ही करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के थ्रू, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, उनके द्वारा दिया जाता है. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इसके कॉस्ट है, क्योंकि एलटीटीडी प्लांट्स को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होता है. तो इसमें जनरली प्राइवेट प्लेयर्स का बहुत कम रोल है, गवर्नमेंट का ही इन्वॉल्वमेंट आता है यहाँ पर. अभी जो इसका मिनिस्टर है मैं बता दूं, किरण रिजिजू है. किरण रिजिजू. किरण रिजिजू इज द मिनिस्टर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. ही इज हेडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस. उनको जिम्मेदारी दिया गया है. ठीक है माया? एनीबडी एल्स? अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम ऐसा करता हूँ, आपके जो आंसर का फीडबैक मैं दे देता हूँ वेरी क्विकली, सो दैट वी कैन एंड द सेशन. और ये दोनों पीडीएफ आई शेयर राइट नाउ इन माय टेलीग्राम चैनल. ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा. लेट मी गो टू द दिस पार्ट. मैंने जो भी उसके है, मैं अभी सारा आपके सामने इन फ्रंट ऑफ यू ओनली गिव देयर. जो मुझे पता है उसमें शुभम हैज गिवन मी, श्रेया का आया हुआ है. ठीक है, वर्षा हैज गिवन मी द, उसमें मैं ओपन कर लेता हूँ टेलीग्राम चैनल से. वर्षा हैज गिवन टू मी, राइट. तो वो सारे हैं वहां पर. और मैं एक एक करके करता हूँ. जो लोग यहाँ पर हैं मैं पहले उनको मैं दे देता हूँ. शुभम वहां पर है. शुभम इज देयर. शुभम ने मुझे पीडीएफ दिया है. मैं शुभम से स्टार्ट करता हूँ. शुभम, आर यू देयर? यस सर. अच्छा ठीक है, बहुत देखो आप, ये चीज है मैं शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, ये आंसर शुभम ने सबमिट किया है. क्वेश्चन आपको पता ही है, मैं क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. हाउ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन एडवांसिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. पहला पार्ट है यहाँ पे इनोवेटिव टेक्नोलॉजी. ठीक है, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ. पहला पार्ट आता है इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के बारे में. ठीक है, तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का कैसे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से हम डेवलप कर सकते हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दिस वन. और उसका एप्लीकेशन पार्ट मैंने पूछा था 21st सेंचुरी में, और उसके लिए क्या सपोर्टिव फ्रेमवर्क होना चाहिए. ठीक है, तो नाउ व्हाट ही हैज गिवन हियर. पहला चीज ये चीज है, आप देखो, व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग आंसर, शुरुआत में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है, पहले पूरा वर्ड लिखना है वहां पर. फर्स्ट यू राइट द कंप्लीट वर्ड मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, देन इन ब्रैकेट यू राइट MB, देन आफ्टर दैट यू कैन यूज MB. ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स वो राइट नाउ, सबके लिए. whenever you are writing first time in the answer any kind of words and you want to use short form there, abbreviation, so first time you write full form, write in bracket short form, then later on in your answer write the short form. ठीक है, क्योंकि अगर आप इनिशियली आप MB लिखते हैं तो माइट बी एग्जामिनर को, ऐसे तो नहीं है, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा MB इज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, बट एक मैं तरीका बता रहा हूँ, एक बेटर वे होता है. ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये विथ रिस्पेक्ट टू वायरसेस एंड ऑल, अब जैसे एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस इस तरह से लिखना है. दिस इज द राइट अप्रोच कि फर्स्ट टाइम यू आर राइटिंग द वर्ड एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस, देन यू राइट इन द ब्रैकेट द शॉर्ट फॉर्म, एंड देन लेटर ऑन यूज ओनली AMR वर्ड. या क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया हुआ है, सपोज UPSC आस्क्ड इन द क्वेश्चन AMR वर्ड इज
anti-macro resistant bracket AMR is given the question only. Then in your answer use AMR only. ठीक है? तो that's it. ये introduction is all right. ठीक है? Introduction is perfect. That is all right. ठीक है? Now how MB can be useful? मैंने इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए बात किया था. तो लाइक इंडस्ट्रियल जेनेटिक स्टडी में पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट. बट व्हाट इज हियर, व्हाट यू आर लैकिंग द एग्जांपल. whenever you write any technology part और कुछ भी अगर आप बताते हो कि उसका कुछ एप्लीकेशन है, आप वो सुटेबल एग्जांपल दिया करो. प्लीज गिव द एग्जांपल देयर. लाइक इंडस्ट्रियल जेनेटिक स्टडी, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, जैसे एग्जांपल क्या है? डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, finding out disease, like for example RT-PCR, PCR study which can find out any virus or any kind of genetic aspect of a virus or bacteria or any parasite. कई बार क्या होता है, a person who is born with genetic disorder, हम उसको स्टडी कर सकते हैं. अब मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ. DNA माइक्रो एरे, अब नैनो एरे भी आ चुका है. जो फॉल्टी डीएनए है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं लैब में, और जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. डीएनए माइक्रो एरे. Now that is one of the innovative technology you are mentioning here. Then what is the genetic engineering to prevent trait to go to reset generation? Like here, give example. For example, hemophilia, sickle cell anemia. Write the name of diseases. Right, which जहां हम यूज कर सकते हैं. अब जैसे यहाँ पर ये चीज है, तो now gene therapy he has given. तो gene therapy is very good word. Gene therapy, that is the future, right? Future of medical therapy, medical biotechnology. अब यहाँ पर क्या है? The removal of defective stem cell from bone marrow and setting the good functional cell back. तो like stem cell here, you can start underline this word stem cell therapy. मैंने लास्ट टाइम अपने सेशन बताया भी था, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, राइट. अब यहाँ पर जो आईवीएफ होता है, जैसे टेस्ट टू बेबी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आर्टिफिशियल वुम्ब. नाउ दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल. साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू डेवलप आर्टिफिशियल वुम्ब, यूट्रस देयर, राइट. दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ ग्रोइंग ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स इन द अदर एनिमल्स, वेरी गुड. अब जैसे यहाँ पर है ना ट्रांसजेनिक एनिमल्स लाइक पिग, मैंने लास्ट सेशन बताया तो पिग्स वगैरह जो है, जैसे ह्यूमन हार्ट इनसाइड द पिग, एंड फ्रॉम पिग वी कैन ट्रांसप्लांट टू ह्यूमन बॉडी. जीनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है ना. दिस वर्ड कम्स जीनो ट्रांसप्लांटेशन. that I mentioned that can, right? Shubham has given that is really good. Now how government may implement, उसके लिए framework क्या होना चाहिए? So now you see multi-stakeholder approach. So what you do, Shubham, whenever you write, underline the word. Don't use red pen, use normal blue pen only, but underline it. Like government along with private players. तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो PPP mode, public private partnership mode. Government lab to market with the help of biotech companies can bring those technology to the market. Then here government has to provide funding, finance, support R&D. तो उसके लिए कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. राइट द नेम ऑफ डिपार्टमेंट. थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, right? Then you have written here, while using modern biotechnology, ethical code of conduct. Underline this one. We have to also develop ethical guidelines. This is stem cell research, embryonic stem cell. So we need to have ethical guidelines for that stem cell research, which can be used for medical therapy. Then again, no, safety of patient should be at topmost priority there. ठीक है, वो पार्ट यहाँ पर है. Government must also put effort to develop interest regarding biotechnology in youth. They can take up the research studies and all this, and that can help in job. So यहाँ पर what is the skill development? After doing post graduation and all, they can go for jobs in biotechnology industry. तो यहाँ पर ये चीज है.
This part is all right. Incentive, that's all right. Funding should be regular and large enough, that's correct. Genome sequencing, DNA fingerprinting can be some of the focus area. Then he has given government initiative here, like Ummid, Manav, National Genomic Course. He has given the initiative part. ठीक है, तो ये ठीक है. यहाँ पर कुछ पॉइंट जो मैंने बताए वो उसको ध्यान में रखना है. शुभम, एनीथिंग टू आस्क? शुभम, डिड यू अंडरस्टैंड हियर? Yes, I got it. ठीक है, तो कुछ कुछ चीजों के उस पर वर्कआउट करना है. आपने एक आपने यू मिस्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, CRISPR-Cas9. CRISPR-Cas9, there's another new technology which has come, gene editing tool. Okay, sir, I have not read about it. I will update you, sir. Gene editing tool, CRISPR-Cas9, is a highlighted topic that again is an innovative technology in modern biotechnology there. Right? Okay, sir, I will add the examples and Yes, this. that's good, very good. So this is the, so I will save this file and you will get it there. I'll put in the Telegram channel. Okay. So now this is the one, right? Now Shreya is there. Shreya? Sir, one Yes, thing. sir. Yes, हाँ. Yes, Shubham. हाँ, क्या पूछ रहे थे बताओ? Sir, just it's my first answer of biotech. So, like out of 10, 15 marks, how many will you? See, out of 10, see, this is a 15 marks question. So out of 15 marks, I would give you around here 7, 6 or 7. It will go around 6 or 7. See, generally remember that in mains exam, you will not get to write, when you write, actually in mains exam, कई बार होता है सारे पॉइंट्स नहीं आ पाते हैं, ऑल पॉइंट्स नहीं आ पाते हैं, तो दैट्स वहां पर एक एवरेज मार्क्स मिलता है कैंडिडेट्स को. दैट मीन इफ यू कैन गेट 50% मार्क्स आउट ऑफ 15 मार्क्स 250 वर्ड्स, अगर आपका अराउंड 7-8 मार्क्स आ जाता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड आंसर. इसमें 6 तक कम मिलेगा. ठीक है, दैट मीन्स नॉट, मतलब यू आर स्टिल देयर, मतलब यू आर ऑलरेडी देयर. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू राइट विद इन द वर्ड लिमिट्स प्लस टाइम मैनेजमेंट. जैसे आप घर पे लिखते हो तो आप टाइम लेके लिखते हो, बट व्हेन यू आर इन एक्चुअल यूपीएससी हॉल, मेन एग्जाम राइटिंग है, तो आपके पास टाइम बहुत कम होता है. तो देयर आर यू एबल टू ब्रिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ द आंसर, उससे आपका मार्क्स डिटरमाइन होता है. तो हियर 6 मार्क्स विल गेट देयर इन दिस आंसर. बट अगेन read about CRISPR-Cas9 and all, but I am very happy that आपने कुछ प्रोग्राम का नाम बताया, उम्मीद के बारे में बताया है ना. जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के केस में मानव करके अभी प्रोग्राम चल रहा है. माइक्रोबायोम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन बॉडी में होता है, उसके लिए प्रोग्राम चल रहा है. राइट? तो यू हैव गिवन दोस काइंड ऑफ एग्जांपल्स, दैट इज रियली गुड, इज वेरी वेरी गुड. तो व्हाट यू कैन डू, जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको थोड़ा आप कम कर सकते हो, and other part को, so that it comes within word limits, 250 words में आ जाए. Okay, sir. Thank you. Right? Thank you. Yes, Shreya, are you there? Yes, sir. अच्छा ठीक है, मैं आपका, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर श्रेया का जो आंसर है. श्रेया, एक मिनट, एक सेकंड, आपका सीक्वेंस में देख लेता हूँ, व्हाट टाइप ऑफ सीक्वेंस यू हैव. जस्ट 1 सेकंड. All right. So I got the point here. Now look at here. Again, I'll show everyone's there this particular answer of Shreya. You will be able to see that. Shreya ने काफी मेहनत की है इसमें, और इन्होंने लिखा है वहां पर, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन को. You all can learn from others answer, है ना. दूसरे के आंसर से काफी चीजें सीखने को मिल जाता है. Sometimes new points can come, right? This is the answer of Shreya. तो श्रेया का जो आंसर है, श्रेया, पहला मेरा ऑब्जर्वेशन है, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा हो रहा है. इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा, इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी मोर देन 2 to 3 सेंटेंस. कभी भी आप आंसर लिखते हैं, लाइक बायोटेक्नोलॉजी कमर्शियल एप्लीकेशन प्रोडक्ट इन्वॉल्व डेलिबरेट मैनिपुलेशन, तो यू हैव इन्वॉल्व, योर इंट्रोडक्शन इज वेरी गुड, मतलब थोड़ा अच्छा है. मेडिकल प्रोसेस में है, न्यू ड्रग वगैरह यहाँ पर है,
एप्लीकेशन पार्ट में लाइक अब आप देखो, आप श्रेया के आंसर में शी हैज गिवन वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल, molecular diagnosis for effective treatment of disease, to the point, है ना. Recombinant DNA technology, PCR, MELISA, mobile enzyme linked immunosorbent assay जैसे ELISA होता है. Then just like Shubham, she has also given gene therapy, chimeric antigen receptor, very good example. जीन थेरापी में एक नोवाटिस कंपनी ने एक मेथड लाया, CAR T, जो कि जीन थेरापी मेथड है. इट बेसिकली ट्रीट रेयर ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया को ट्रीट करता है. अमेरिकन FDA हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ CAR T थेरापी इन USA. इसको काइमरिया ही बोलते हैं, काइमरिया, KYMRIAH. Shreya, you have really given very good example here. Then if I come to the next one here, what she has given, that is another one, this one, somatic cell gene therapy. बहुत अच्छा एग्जांपल दिया श्रेया ने, यूजिंग 3D printer and stem cell bioprinting. Organ can be printed in the lab. Kidney, blood vessel, सब बायो इंक यूज होता है. यहाँ दिया बोन मैरो, सी यू कैन सी हियर, जो अभी ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, कार्टिलेज, हार्ट वाल्व, ब्लड वेसल. Then Rings of trachea. Yes, rings of trachea, very good. She has given CRISPR-Cas9 gene editing tool. Then bioinformatics, use of computer science, software, and now AI has come, artificial intelligence, which we can use in the field of biotechnology. That is the bioinformatics, जहां पर हम सारा डाटा एनालाइज कर सकते हैं. जीनोमिक स्टडी, genome sequences, protein study, proteomics. She has given that one. This is hybridoma technology, very very important, very important. अभी ये न्यूज में था, पता है कहां पर था न्यूज में? ऑस्ट्रेलिया से हम ले रहे थे. कौन सा डिजीज के लिए न्यूज में था? हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. अभी रिसेंटली न्यूज में था. इंडियन गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू गेट दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. क्या बोलते हैं? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ऑफ सेम टाइप विच इज यूज्ड टू फाइट इन्फेक्शन. श्रेय बताओ कहां न्यूज में था? ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ले रहे थे वैक्सीन तैयार करने के लिए. कौन सा ऐसा डिजीज था इंडिया में जहां मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट थी और उसके लिए हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज होता है लैब में? एनीबॉडी कैन टेल मी? नीपा वायरस. नीपा वायरस कहां है था? नीपा वायरस केरला, ठीक है. तो उस समय वहां पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट थी. तो हमारे इंडिया में उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है, तो वी वर टेकिंग द हेल्प ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू गेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. अब यहां पर आता है कि व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. बी सेल एंड टी सेल जो होते हैं एंटीबॉडीज, शी हैज गिवन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोर्टिव फ्रेमवर्क में शी हैज गिवन दैट सेटिंग ऑफ 1996 डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी, वेरी गुड. We have now one department of biotechnology under Ministry of Science and Technology. Anything with respect to biotechnology. अब जैसे इन्होंने बहुत अच्छा नाम दिया है, नेशनल बायो फार्मा मिशन, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. क्या है नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी? अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम, आत्मनिर्भर भारत. By the year 2025, India aim to make biotech sector $100 billion industry. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, स्ट्रेटेजी. बायोफार्मा मिशन, मेडिकल डिवाइसेस, बायोमेडिकल पार्ट, डिजीजेस ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन शी हैज आल्सो गिवन हियर her next part is this one. Let me just she has given about mission she has mentioned. Let me just go into that. She has given next one is this one. बहुत सारा इन्होंने लिखा है, जीनोमिक टेक्निक के बारे में दिया है, प्रिडिक्टिव जेनेटिक हेल्थ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है. ये देखो अब ये स्पेसिफिक आंसर्स हैं. इंटरनेशनल कैंसर जीनोम रिसर्च है. मानव इनिशिएटिव शुभम हैज आल्सो मेंशन. ह्यूमन माइक्रोबायोम मैंने बताया था, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनसाइड ह्यूमन बॉडी इन आवर इंटेस्टाइन, उसका जेनेटिक मैपिंग किया जा रहा है.
उम्मीद इनिशिएटिव है ना, इनहेरिटेड डिजीज जो होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि बाय बर्थ आता है, निदान केंद्र वगैरह होगा जो शुभम ने भी मेंशन किया है। अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, गर्भिणी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मदर और चाइल्ड के हेल्थ के लिए, और वहाँ प्रिडिक्शन टूल होता है, जैसे कि प्री टर्म बर्थ। कई बार क्या होता है, 9 महीने का से पहले बच्चे का जन्म हो जाता है, तो उससे बच्चे कमजोर होते हैं, चाइल्ड इन्फेंट। कई बार इन्फेंट का डेथ हो जाता है, कई बार मदर का डेथ हो जाता है, मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो उनका प्रिडिक्शन करना, मतलब डॉक्टर्स कैन नो दिस पर्टिकुलर प्रेग्नेंट मदर कैन हैव प्री टर्म बर्थ, उसके लिए गर्भिणी है, ये वहां पर किया है, बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। देन यू सी मिशन AMR, एंटी माइक्रो रेजिस्टेंस, वेयर मल्टीपल ड्रग्स are failing to treat or kill or remove any type of bacteria, virus and all this. वैक्सीन का प्रोग्राम जैसे COVID-19, इंडिया was able to develop successfully vaccine for COVID-19, है ना। बायोलॉजिकल डेटा सेंटर है, ये सारा है। डिपार्टमेंट एटॉमिक एनर्जी has signed agreement MOU with डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी फॉर स्टडी ऑफ कैंसर। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए रेडियो न्यूक्लियस इज यूज्ड, रेडियो आइसोटोप, न्यूक्लियर मेडिसिन, है ना। लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, जो ट्यूमर होते हैं, उसके लिए क्या हम यूज करते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन, रेडियो आइसोटोप, गामा रेडिएशन वगैरह यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी। एंड वेयर द न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कम्स, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, उसके लिए किया जा रहा है। गुड वन श्रेया, यू हैव ब्रॉट वेरी सक्सेसफुली पॉइंट ऑफ दैट। आपका स्कैन है, अब आपसे ये करना है, मैं आपको बताता हूँ, आपसे जो लोग सबमिट करेंगे आप PDF में करना। आप उसमें क्या होगा, आई विल बी एबल टू मार्क विथ माई दिस वन पेंसिल, एंड आफ्टर गिविंग माई फीडबैक देयर, मैं आपको उसको वापस में कर दूंगा थ्रू द टेलीग्राम चैनल। इसमें क्या है, भी इमेज है, तो इमेज में दिक्कत क्या होता है, कभी मैं उसे मार्क नहीं कर पाऊंगा, मैं ये मार्क नहीं हो पाएगा विद पेंसिल देयर, राइट, बट इट कैन बी डन थ्रू दैट। श्रेया, Yes, sir. वेल डन, लेकिन Thank you, sir. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है Yes, sir. आपने बहुत सारे सोर्सेस पढ़ के आपने लिखा है, ठीक है, हाँ. तो कोशिश करना है खुद से लिखने का। आई मीन टू से Yes, sir. व्हाट इज माय पॉइंट इज दैट, पहले आप पढ़ लो, आप सब जगह से, राइट, रीड ऑल द वेबसाइट, मॉडल आंसर, सारी चीज आप पढ़ लो। आप एक पेपर में पॉइंट को आप लिख के लो, अच्छा दिस आर द पॉइंट, सी टू एवरीवन इन द क्लासरूम, व्हेन यू हैव अ क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, पहला चीज है अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सेकंड क्या करना है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, व्हाट यू नीड टू डू, you need to frame the answer, develop the structure, introduction, body, conclusion। आप एक पेज में जॉट डाउन कर लो पॉइंट्स का, ठीक है, इंट्रोडक्शन ये सब की पॉइंट होना चाहिए, एप्लीकेशन ये पॉइंट होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम ये होना चाहिए, सो यू जस्ट जॉट इट डाउन। देन व्हाट यू डू, टेक द पेपर, टेक द पेन, सेट द वॉच, घड़ी, लेस देन 8 मिनट्स, पहले आप ट्राई करो 10 मिनट का, फिर धीरे धीरे कम होगा, एंड नॉन स्टॉप, बिना रुके हुए कंप्लीट द आंसर। ऐसे प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, समझ में आया। टेक द असाइनमेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज क्वेश्चन, रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन में क्या लिखना है, रीड बुक, रीड वेबसाइट, रीड करंट अफेयर मटेरियल, पढ़ो आप उसको, सारे इंफॉर्मेशन गैदर करो, गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, टेक पेपर, रफ sketch, my introduction will be this and this, then लंबी सांस लो, पेपर लो, पेन लो, घड़ी सेट करो, दम लगा के हिस्सा, स्टार्ट टू द एंड, नॉन स्टॉप, विद इन 8 मिनट्स। डू दिस फॉर ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चन, देन दैट विल गिव यू रियल प्रैक्टिस। उससे पता चलेगा कि कई चीज आप भूल जा रहे हो, आपका प्रॉपर सीक्वेंस नहीं आ पा रहा है, राइट, कई बार आप फंबल करोगे टेक्निकल वर्ड पे, बट विथ प्रैक्टिस यू विल इंप्रूव, ठीक है, क्लियर एवरीवन? यस,
अच्छा ठीक है, नेक्स्ट पर्सन किसका है? कौन प्रेजेंट है यहाँ पर? वर्षा है, इज देयर वर्षा? गुरु इज देयर? गुरु गुरु प्रसाद, आर यू देयर? Okay, anyway, Guru Prasad is not there. What? Not a problem there. I'll just discuss about Guru Prasad's answer. Okay, I'm sharing the part of it. ये गुरु प्रसाद का आंसर है. Right. Just one second. Guru Prasad ka. Let me start from the first. This one. So Guru Prasad has very good handwriting. Shreya का भी अच्छा handwriting है. Modern biotechnology has revolutionized healthcare by affecting groundbreaking innovation. It's a good startup. The introduction is good. Then precision medicine कहाँ का use होगा? Genetic makeup, right? Tailor-made medicines and all this one. He has written. Biotechnology enable genetic sequencing, identifying. यहाँ उन्होंने application paragraph में लिखा है. See, एक है जो Shreya and Shubham has done, has given point wise, right? Here he has given the part of. Then he has given collaborative platform, knowledge sharing, leveraging modern biotechnology healthcare sector. तो इसका Guru Prasad, your answer is becoming very general. Examples are lacking there, right? So whenever Guru Prasad see this video in YouTube channel, just like Shreya or Shubham has given examples, and introduction is becoming very lengthier. Introduction, one paragraph, then go to the application part, give the examples there. वो यहाँ पर नहीं आ रहा है. He has given there like biopharmaceutical, vaccine, monoclonal antibodies, gene therapy, but just elaborate on that. ठीक है, जैसे Shreya has given that example there. He has written there. Guru Prasad ने लिखा भी है. कुछ चीजें जो है इसमें जैसे कि biopharmaceutical, development of cancer drug, malaria, give those example. Monoclonal antibodies, habidoma technology, and it was required in Nipah virus case. Give that example from current affairs. ठीक है, तो part में जो है, तो again promoting research. Your last part is okay. I've seen your answer. Guru Prasad, your last part is okay. कि यहाँ पर जो है production part, make in India, manufacturing part, research funding. Shubham ने भी लिखा है ये चीज, तो that is all right there. Then advance in biosensor, genomic testing, imaging technology, instruments, skill development, more research scientists, quality testing of the lab, manufacturing unit of biotechnology sector. So your this part is okay. Acha Shreya, for your answer, I'll give you 8 marks. Shreya? Yes, sir. You have done well, you have got 8 marks. For Guru Prasad, I'll give 5 marks. Not more than 5 marks. Answers are there, points are coming there. But वो उतना मतलब I need some kind of specific point and some kind of small type brief explanation. थोड़ा सा explanation भी चाहिए मुझे. He has written all those things, but इसका क्या हो रहा है? एक flow lack कर रहा है. अब जैसे इन्होंने framework बताया, then he is coming to the contribution security to diagnostic enhancing and all this. This you have already covered application. Now come to program, policy, government schemes, how to promote the research, funding. तो वो part होना चाहिए. तो थोड़ा गुरु प्रसाद को थोड़ा मेहनत करना होगा. Clear there? Guru Prasad, are you there? अच्छा, he is not there. Anyone else who is there right now? Okay, ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ. उत्तम आपने सबमिट किया था? उत्तम No, sir, मैं सबमिट नहीं कर पाया था थोड़ा. एक तो मैंने शुभम का किया है, गुरु प्रसाद का मैंने दिया और श्रेया का किया है. जस्ट वन सेकेंड. एंड Barsha is there. Is there Barsha right now? Then with this we'll be able to end the answer also there. Barsha. Let me see Barsha here. मेरे पास 4 आंसर्स आए थे, राइट.
If I missed, then please let me know. If I have missed out anywhere, then you can tell me there. 1, 2, 3, 4. अगर किसी ने इंडिविजुअल मुझे भेजा होगा तो प्लीज लेट मी नो. So Shreya, I have given there. Okay, let me very quickly. Barsha का मैं कर देता हूँ. Let me go to the Barsha's answer. I'll share her my screen here. So you can all see the Barsha's answer. So Barsha ने पहले ये फ्लो चार्ट यूज की है. She has used, ये भी एक अच्छा तरीका है. Biotechnology is one of the world's most dynamic innovative sectors. Scientific, innovative, sustainability and all, healthcare, agriculture. She has given a general introduction. Then she has come into this flow chart. Can you all see this? The gene editing, CRISPR-Cas9, biotech innovation, biosensor. गुरु प्रसाद ने भी बायोसेंसर के बारे में दिया है. 3D bioprinting. Even Shreya has also mentioned that. सर वो हेल्थ केयर के में बायोटेक का इनोवेशन क्वेश्चन में था. हाँ वही चीज है वो. CRISPR-Cas9 बायोसेंसर, वो हेल्थ केयर का ही. देखो आप, बायोसेंसर, डिजीज डिटेक्शन, ड्रग डिस्कवरी. वर्षा ने उसी तरह दिया. वर्षा has given that with 3D bioprinting, right? Drugs and all this. Then you see bioenergy, biofuel. That is, you can say biofuel, bioenergy, bioplastic. है ना, वहां पर वो मेडिकल का नहीं है, but you can see here what she is writing here. Bioplastic क्या लिखा है? Reduce carbon footprint production. This is not sustainable and less toxic and also helps in increasing soil. तो ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं लिखना. तो what's Varsha has done mistake. Gene editing is all right, biosensor is all right, 3D bioprinting is all right. ये दोनों हेल्थ का नहीं है. बायोप्लास्टिक इज इन्वाटर एस्पेक्ट, एनर्जी भी इन्वाटर एस्पेक्ट. तो ये थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया, क्योंकि क्वेश्चन इज आस्किंग स्पेसिफिक फॉर हेल्थ सेक्टर. तो एक ये चीज यहाँ पर उन्होंने गलती किया. शी हैज रिटन अबाउट दैट एरिया देयर, है ना. देन यू कैन सी हियर दिस वन. लेट मी सी. शी हैज गिवन दिस वन, एप्लीकेशन जीन थेरेपी. अब यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है. सी हियर, everybody can see this. She has given example in curing a disease called ADA, adenosine deaminase, है ना. हेरिडिटी डिजीज के लिए जीन थेरेपी का यूज है. देन मोलिकुलर डायग्नोसिस, फाइंडिंग आउट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर, देन ELISA, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट. देन you know diagnosis HIV through PCR. ELISA can be used also for screening test. Then CRISPR technology, gene editing tool, you know, lympho, like here cystic fibrosis, लीमोफिलिया, हीमोफिलिया, जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, हीमोफिलिया, सिकल सेल डिजीज, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, राइट. दैट इज व्हाट शी हैज गिवन. देन शी हैज आल्सो गिवन अबाउट, नाउ लुक एट हियर अनदर, ट्रांसजेनिक एनिमल. मैंने बताया कि एनिमल कैरिंग ह्यूमन ऑर्गन, है. लैक्टोज इंटॉलरेंस को किया गया है. मॉडल फॉर ह्यूमन डिजीज, ट्रांसजेनिक मॉडल्स कैन बी अल्जाइमर स्टडीज वगैरह, आर्थराइटिस. फिर देन वैक्सीन सेफ्टी, ट्रांसजेनिक माउस वगैरह में. शी हैज गिवन दैट काइंड ऑफ एग्जांपल हियर. देन सपोर्टिव फ्रेमवर्क, पॉइंट वाइज शी हैज रिटन. इंडिया अलाउज 100% FDI in where biotech sector. अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन, श्रेया ने भी लिखा है. शुभम हैज मिस्ड दैट वन. बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च, बिराक, that is a council which give the support for skill development, capacity building, tie up with the biotech industry and lab. Then biotechnology parks and incubators, startups, है ना. जैसे बैंगलोर में बायोटेक इंडस्ट्री वेरी एडवांस है, बहुत डेवलप्ड हुआ है. बैंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, NCR दिल्ली में, गुरुग्राम वगैरह जो एरिया है, लखनऊ इन यूपी. तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क वगैरह जो है, दैट पार्ट कम्स हियर, राइट. Then her last part, she has given the last part, this one, way forward. Active government support, favorable industrial location for R&D development and all, adequate reward for innovation, promotion of private sector investment. Very nice structure. She has started with one general biotechnology, given flow chart. उसमें दो चीज थोड़ा मिस हो गया, बायोफ्यूल एंड बायोप्लास्टिक, but she has given very good example of application part. And at the last she has given even framework, point wise सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को बताइए उन्होंने. And the last given way forward.
But what is the limitation? Her word limit has gone very high. इनका आंसर का वर्ड लिमिट बढ़ गया है, 3.5 पेज का आंसर है. इन यूपीएससी एग्जाम 250 वर्ड्स, नॉट मोर देन 2.5 पेज. तो वर्षा के लिए पहला ये मेरा है कि दैट बायोफ्यूल बायोप्लास्टिक इज ऑफ ट्रैक, दैट एग्जांपल. सेकंड, व्हाट आई विल से टू वर्षा इज दैट आंसर इज वेरी लेंथी, कट डाउन, कट शॉर्ट, छोटा कर दो आप. अब फ्लो चार्ट डायग्राम में ही बता दो एप्लीकेशन पार्ट. Then don't write in paragraphs. If you're using paragraphs, then don't use the flowchart. If you want to use both of them, then properly manage the words, right? Or it should be 2.5 page. So she has to make her answer brief. That's my feedback. And second, again, what I've said to everyone, first you read, make a framework without looking anything, write within a word limit and within time limit, less than 8 minutes. ठीक है, यहां तक क्लियर है एवरीबॉडी? ठीक, तो आज का जो अर्थ साइंस का था, डॉक्यूमेंट्स आई शेयर देयर. ठीक है, नाउ टू एवरीवन व्हाट आई वुड रिक्वेस्ट कि अब जो नेक्स्ट मेंस का असाइनमेंट है ऐसे ही प्रैक्टिस करना है जो मैंने भी आज के सेशन में बताया है. और दूसरा क्या है, आप मुझे पीडीएफ देना, इमेज की जगह पीडीएफ बना के देना. तो पीडीएफ में क्या होगा, आई विल यूज माय पेन एंड राइट द फीडबैक एंड देन शेयर विथ यू इन द टेलीग्राम ग्रुप. दैट यू कैन यूज एज अ, कभी भी आप रिव्यू करेंगे आंसर तो यू विल सी माय कमेंट्स एंड फीडबैक. ठीक है एवरीवन? सर आज का असाइनमेंट अर्थ साइंस पे? आज का असाइनमेंट मैं अर्थ साइंस में दूंगा, अभी टेलीग्राम चैनल में मैं देने वाला हूँ. इन माय टेलीग्राम चैनल आई विल गिव द अर्थ साइंस. जो आज मैंने डॉक्यूमेंट दिया है ना, माय क्वेश्चन ऑफ मेंस असाइनमेंट विल बी बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड इन द सेशन. अर्थ साइंस पे होगा. ठीक है? यस सर. मैं लिख देता हूँ अगर है. लेट मी डू वन थिंग हियर. Let me just give that part. So let me just write here. So Big Bang series का ही जो है मैं लिख देता हूँ नीचे ही. Assignment 4 जो लोग हैं लिखना चाहे तो you can write it down. So the question is this one. Assignment number 4. I'm giving for earth sciences. You can write it down. Then I'll also type in the Telegram channel and I'll give it there. So the question will be this one. Discuss important, I'm giving a very straightforward question. Important achievements. आप वो डॉक्यूमेंट को देख सकते हो, लेकिन क्या करना है, एक बार पढ़ के खुद से लिखना है. Discuss important achievements of Ministry of Earth Sciences. This is the first part of the question. ठीक है? रीड दोज डॉक्यूमेंट जो मैंने क्लास में बताया. अब जब अचीवमेंट बताएंगे तो सब कुछ नहीं बताएंगे. यू सेलेक्ट 4-5 गुड एग्जांपल्स. राइट नाउ सेकंड थिंग, सेकंड पार्ट इज दैट हाउ अर्थ साइंस रिसर्च. नाउ आई एम गिविंग अ स्पेसिफिक क्वेश्चन देयर. अर्थ साइंस रिसर्च कैन help India fight climate change. Think on this, frame the points and write the answer. How earth science research can help India fight climate change. Right? ये चीज को लिखना है. And this you have to write answer in 150 words. मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है आज. कैसे प्रैक्टिस करोगे आप? जो मैंने बताया, रीड, फ्रेम द आंसर विदाउट लुकिंग एनीथिंग, विद इन 8 minutes, स्टार्ट टू द एंड. हैंडराइटिंग खराब हो, अच्छा हो, पॉइंट सही से आ रहा है, नहीं आ रहा है, भूल गए, कुछ नहीं, पूरा टाइम के साथ लिखना है और उसका पीडीएफ बना के मुझे शेयर करना है. ठीक है सभी को? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? Right? Yes. It's already now 11:15 in the night. We have started at 9 o'clock. It's more than 2 hours. किसी ने कुछ बोला ही नहीं, मतलब you had all had your dinner. Yes, Uttam, Maya, Shubham. Let me see Yes, my sir. in my acha, Maya is there in the
मोहम्मद आयूब हैज आल्सो ज्वाइंट, राइट? मोहम्मद आयूब का यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। सर कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट इकोलॉजी का करंट अफेयर्स कैसे करें? ये मैंने बताया हुआ है। इफ यू गो बैक टू माय, मेरे चैनल में बहुत सारे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। पहले सिलेबस को कवर करना है, फर्स्ट कवर द सिलेबस, उसके बाद करंट अफेयर्स को साथ जोड़ना है एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो मोहम्मद आयूब आपके लिए मैं बता रहा हूँ, पहला क्या है, कंप्लीट द सिलेबस प्रॉपरली, अच्छे से, साइंस टेक इन्वायरमेंट के एनसीईआरटी बुक वगैरह जो भी है। सेकेंड थिंग क्या है, करंट अफेयर्स में जो जो टॉपिक्स आ रहे रिलेवेंट 1-2 साल का वो पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यही अप्रोच रखना है। अखंड प्रताप इज देयर, थैंक यू, यस थैंक यू अखंड फॉर ऑल योर प्रेस एंड अप्रिसिएशन, राइट? अच्छा ठीक है, अगेन आई थिंक लास्ट टाइम में लोगों ने इसको शेयर किया तो कुछ 10 लोग जुड़ गए यहाँ पर आप बाकियों को शेयर करो ना, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है या बाकी जो भी ग्रुप्स हैं, प्लीज शेयर द टेलीग्राम ग्रुप चैनल लिंक, डिस्कशन वाला जो फॉरम है उसको आप शेयर कीजिए, एंड ऑल्सो द यूट्यूब चैनल लिंक देयर, सो दैट मोर पीपल कैन कम एंड कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस, है ना? दिस विदाउट एनी कॉस्ट, इसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जैसे जैसे मुझे टाइम अवेलेबल होता है तो आई एम कंडक्टिंग दिस काइंड ऑफ सेशन देयर, राइट? सो दैट बहुत लोग इसमें जुड़ेंगे तो उनको एग्जाम का, जब एग्जाम करीब आएगा तो उनको हेल्प मिलेगा, और उनका जो भी रिकॉर्डेड वीडियोस है मेरे, वो उसको वॉच करना है, ठीक है? आयुब इज क्लियर? आयुब आपको समझ में आ रहा है? पहले सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, फिर करंट के टॉपिक्स को करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है? सो थैंक यू एवरीवन। अब हम लोग क्लास एंड करते हैं, और जूम सेशन के थ्रू आपको आना है तो टेलीग्राम चैनल में आप जा सकते हो। अच्छा, वन मोर इज अथर्व शिंदे इज देयर, जस्ट वन सेकंड। हाउ टू concentrate for, see he is asking on which subject, just one second, I will just one second. He's asking something other subject there. J Atharv is a UPSC channel. IIT J का नहीं है, for that you have to go to engineering segment में, ठीक है? जेई के लिए आपको फिर वही you have to practice 11th 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, है ना? उसका प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, 12th इंजीनियरिंग के लिए, तो उसके लिए आपको बेस्ट ये है कि आजकल बच्चे 9th 10th से ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं, एंड देन दे लुक एट द जेई के क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 years के जो जेई के मेंस एंड एडवांस जो है उसको देखते हुए फिर उसका प्रिपरेशन करना है, ठीक है? वहां से करना है। तो जैसे सर यूपीएससी, वो हाँ सर जी, वो बुक में मार्क करवा दीजिएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके बुक में। हाँ मैं मार्क कराऊंगा, मैं कराऊंगा अभी। एक्चुअली क्या, मैंने वो मेरे पास बुक नहीं है, मैं जब मिल जाएगा तो आई विल बी मार्किंग दैट। ये सर क्योंकि अपने से समझ नहीं आता है कौन सा इम्पोर्टेंट है और कौन सा टॉपिक छोड़ना है। नहीं, मैं उसका लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बता दूंगा पेज नंबर के वाइज, तो यस दैट सर। कैन फॉलो दैट, ठीक है? ठीक है एवरीवन, सो शैल वी एंड द सेशन नाउ? और वो स्पीसीज का मैं दे दूंगा, टुमारो यू गेट द स्पीसीज लिस्ट, कल आपको मिल जाएगा स्पीसीज का, मैंने ऑलरेडी कंपाइल कर लिया है। टुमारो यू गेट द स्पीसीज लिस्ट, ठीक है? सर और प्लेसेस इन न्यूज या नेशनल पार्क्स इन न्यूज, इस तरह से भी लिस्ट। अब वो मैं एक सेशन करा दूंगा, उसके लिए आई डू इट सेपरेटली देयर, वो ओके बाद सर, में मैं कराऊंगा जनवरी के बाद, कि ठीक मैपिंग है। का पार्ट जो है, प्लेसेस का पार्ट, दैट विल डू दैट। यस यस सर। माया, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? यस माया, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? माया, आपकी आवाज नहीं आ रही है, यू हैव रेज्ड योर हैंड, दैट्स व्हाट। कोई डाउट नहीं है तो शैल वी एंड नाउ दिस पार्ट? सर मैं लास्ट असाइनमेंट में कल परसों तक सबमिट करूँगा इशू। उत्तम, हाँ जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा है। सर वो लास्ट असाइनमेंट जो था हमारा, हाँ वो मैं कल या परसों तक मैं सबमिट करूँ सर? हाँ, सबमिट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, मैं और दोनों आंसर टेलीग्राम चैनल सबमिट में, करूँगा सर। हाँ टेलीग्राम चैनल क्वेश्चन है, आप वहां से करके कर सकते हो। नहीं सर, मैं अटेंड नहीं कर पाया सर, 2 सेशन थोड़ा बिजी नहीं, था वो मैं। रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वहां पर, यस सर। ऑलरेडी वो सेशन का रिकॉर्डेड वीडियोस है। अच्छा, यस। वी विल हैव नेक्स्ट सेशन डे आफ्टर टुमारो, परसों अगला सेशन होगा डिजास्टर मैनेजमेंट पे, तो अगर आप कल ओके। सबमिट कर देते हैं
तो मैं उसका फीडबैक मैं आपको थर्सडे को दे दूंगा। यस डिजास्टर सर, मैं मैनेजमेंट, कल सबमिट कर दूंगा सर। हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट सेशन है, फिर मैं करंट एस्पेक्ट में डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट। ओके सर। Right. So everyone, let's end the session here. We'll meet on Thursday, day after tomorrow, on disaster management segment. Okay. So good night, everyone. Take care. Okay. Thank you, everyone, for attending this. All Thank right. you, sir. Take care. Bye bye. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you, everyone. Thank you.